जो पाठ आपने दिया है, जो whatever you have given in written, only that goes उसी on के the बारे में record. बात कर रहा हूँ। नहीं, उसी के बारे में बात माने जो आपने लिखा है, प्लीज लिसन मी, जो आपने लिख करके दिया है केवल उसी को पढ़िए। 371 में only that matter goes on record. What are you are speaking? ओके ओके सर, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। Yes, yes, इसलिए ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನು ನಾನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ IFS ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಸಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, केंद्र सरकार ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। थैंक यू। श्री अरुण कुमार सागर जी, जो पाठ आपने लिख करके दिया है उसी को कृपा करके पढ़िए, वही रिकॉर्ड में जाएगा। जी हाँ करें, प्रारंभ करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नियम अध्यक्ष महोदय आपने नियम 377 के अधीन मामला उठाने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फरुखाबाद, अल्लाहगंज, जलालाबाद, शाहजहांपुर, पुवाया, कुटार, मैलानी, जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, नई रेलवे लाइंस को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसका सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस परियोजना पर अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उपरोक्त रेलवे लाइन के स्थापित किए जाने से जहां शाहजहांपुर, फरुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत जो अत्यंत पिछड़े जिले हैं, मान्यवर, इन जनपदों को दूरी ग्रामीण अंचलों रेलवे नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। भाई, सैन्य छावनी के कारण शाहजहांपुर और फतेहगढ़ जैसे सुरक्षा की दृष्टि से सामाजिक केंद्रों का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, टनकपुर स्थित छावनियों से होने पर संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को और अधिक मजबूती प्रदान होगी। माननीय अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए फरुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु धन का आवंटन शीघ्र किया जाए, ताकि क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश को सामाजिक दृष्टि से भी मजबूती मिल सके। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विष्णु दयाल राम जी, जी धन्यवाद सभापति जी। कोविड-19 के दौरान बंद की गई बरवाडीह 54 चुनार पैसेंजर ट्रेन संख्या 53351, 53352 का परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं होने से पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों क्रमशः नगर उटारी, रमना, मेराल, गढ़वा, गढ़वा रोड, तोलरा, लालगढ़ बिहार, रजहरा, कजरी, डाल्टनगंज एवं चिवाकी के यात्रियों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त ट्रेन का परिचालन पुनः प्रारंभ करने की जनता के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। साथ ही रांची 54 एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18613, 18614 एवं पटना सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस संख्या 23347, 23348 का ठहराव मेरार रेलवे स्टेशन पर नहीं की जा रही है। विदित है कि उक्त स्टेशन पर एकमात्र 54 गोमो पैसेंजर ट्रेन रुकती है तथा कोई अन्य पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया है। मेराल स्टेशन से रमना स्टेशन और गढ़वा स्टेशन की दूरी लगभग बराबर है, 11 किलोमीटर की दूरी है, जिसके कारण वहां की जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि ट्रेन संख्या 53351, 53352 का परिचालन पुनः प्रारंभ करने एवं ट्रेन संख्या 18613,
18614 एवं संख्या 23347 23348 का ठहराव बैराल स्टेशन पर करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री नारायण भाई कचाड़िया जी, डॉक्टर उमेश जाधव जी। You speaker, sir. First time I'm speaking in new Parliament House. Sir, in India's 9th Vande Bharat Express between Mumbai CSTM to Solapur 22225 22226 has started on 10/2/23 and is running across Maharashtra. I would like to bring to your kind notice that Gulbarga, that is Kalburgi, is the zonal headquarters of 6 districts of Kalyan Karnataka region. If this train is extended up to Kalburgi, then it would be a great boost to the economy of this region. Has more than 10,000 people travel to Mumbai every day. Considering the time taken on to reach Mumbai, it will be great help for the business community. There is no dedicated train between Kalburgi to Bangalore, which is 4th largest city in Karnataka. There is a huge passenger movement from Kalburgi to Bangalore, and all existing trains are always full, making it hard for general public to get confirmed berths. Further, due to the opening of third coach terminal at Bayapanalli in Bangalore and doubling and electrification between Guntkal, Bangalore, which is almost complete, it is time now to introduce a new Kalburgi-Bangalore overnight train. Kalburgi is having the pit line, so both trains can easily be maintained at Kalburgi station. Thank you. श्री अशोक कुमार रावत जी, मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिक के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 731 पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि संडीला विधानसभा की पड़ता है और संडीला कस्बा भी वहां पर पड़ता है, जिसमें इस निर्माण को लेकर के वहां पर संडीला कस्बे में काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां की जनता ने एक सिंगल पिलर पर एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको मैंने दिशा समिति में भी उठाया है और माननीय मंत्री जी से भी मैं व्यक्तिगत मिलकर के रखा है और इसके लिए नियम 377 में पहले भी मैं रख चुका हूं। मेरा सदन से अनुरोध है कि संडीला कस्बे में नेशनल हाईवे 731 पर सिंगल पिलर पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। अच्छा, ठीक है, गोपाल जी ठाकुर जी। आदरणीय सभापति महोदय, मंत्री जी से बताने की कृपा करेंगे कि क्या नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा बिहार का चयन वर्ष 2018 में हुआ था और इस योजना के तहत पहले चरण में 2 प्रमुख नदियां शहर के पश्चिम दिशा में बहने वाली बागमती नदी एवं पूरब बहने वाली कमला नदी की स्वच्छता को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें शहर के 23 बड़े नाले का गंदा पानी बागमती नदी में, वहीं डीएमसीएच से छपरार घाट तक का गंदा पानी कमला नदी में गिराया जाता है। इसी गंदगी से बचाने हेतु यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था, जो योजना के चयन और स्वीकृति के करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं बागमती नदी के तट पर स्वीकृत शवदाह गृह का निर्माण भी नहीं किया गया है। इसके अलावा दरभंगा नगर निगम अंतर्गत अवस्थित दिग्घी, हराही व गंगा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी लंबित है।
नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा में अभी तक एक भी एसटीपी निर्माण नहीं हुआ है। क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सभी कार्यों की यथास्थिति और प्रगति क्या है? वहीं बागमती नदी की घाट सफाई और घाट निर्माण के साथ शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए अब तक कितनी राशि किस मद में आवंटन किया गया है तथा मंत्रालय द्वारा इसके जल्द क्रियान्वयन हेतु अब तक कौन कौन सी कदम उठाए गए हैं? धन्यवाद। श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल जी। जी धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं खरगोन बड़वानी जनजातीय लोकसभा से आता हूं और आज मुझे नियम 377 के अधीन मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर मिला है। मेरी लोकसभा ट्रेन विहीन है, वहां पर रेल की पटरी तक भी नहीं है और उसको लेकर एक बहुउद्देशीय रेल परियोजना खंडवा से धार वहाय खरगोन बड़वानी जो कि विगत कई वर्षों से लंबित है, उसके सर्वे का कार्य सेंट्रल को सौंपा गया था। वर्तमान में सर्वे की क्या स्थिति है? यदि उक्त सर्वे कार्य को पूर्ण हो चुका है तो फाइनल लोकेशन सर्वे कब तक कराया जाएगा? उक्त रेल परियोजना क्रियान्वयन हेतु रेलवे मंत्रालय की आगामी रूपरेखा क्या होगी जिससे बहु प्रतीक्षित परियोजना का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र मेरे आदिवासी लोकसभा को, यहाँ के जनजाति लोगों को मिल सके? यह मेरा निवेदन था और आग्रह था। पहले भी कई बार मैंने प्रश्नकाल के दौरान और माननीय मंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। ये मैं ऐसा धारा 377 में रखना चाहता हूँ। श्री अशोक महादेव राव नेते। धन्यवाद सभापति महोदय। महाराष्ट्र राज्य में मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ देश का सबसे बड़ा दुर्गम और नक्सलवाद से प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र है। गढ़चिरोली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर गोंदिया जिले में बिरसी स्थान पे एयरपोर्ट स्थापित किया गया था। इस एयरपोर्ट से विमान सेवाएं प्रारंभ भी हुई थी, लेकिन वर्तमान में बंद पड़ी हुई है। दूसरे गढ़चिरोली से नागपुर जो एयरपोर्ट है उसकी दूरी भी गढ़चिरोली से 200 किलोमीटर की है। जिला कलेक्टर गढ़चिरोली द्वारा गढ़चिरोली में एयरपोर्ट की स्थापना कराए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गढ़चिरोली में एयरपोर्ट की स्थापना किए जाने हेतु सार्थक कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रक्षा खड़से जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में विकास किसानों के लिए कार्यकारी सहकारी सोसाइटी, विविध कार्यकारी सोसाइटी एक अहम भूमिका निभाता है। मेरे जलगांव और बुल्डाना जिले में 900 से अधिक सोसाइटी कार्यान्वित है, जिसमें से 550 से अधिक सोसाइटी के हाल ही में हुए ऑडिट के अनुसार कई अलग अलग कार्यकारी समितियों में प्रतिकूल असमानता दिखी वहां पे, और ये बहुत गंभीर और चिंताजनक मामला है। विकास सोसाइटियों के इस डिफरेंस के कारण किसानों को काफी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान टाइम पे लोन नहीं चुका पाते हैं और भारी बारिश और तूफान जैसी प्राकृतिक आपत्तियों के कारण किसान समय पे क्रॉप लोन नहीं भर पाता है। तो मेरी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से विनती है कि सरकार इन सोसाइटियों को सब्सिडी उपलब्ध करवाए, जिसके कारण किसानों को इसमें फायदा हो सके। धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। श्री उन्मेष पाटिल जी। नहीं है। श्री सुजय विखे पाटिल जी। श्री मितेश पटेल जी। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी।
मैं हिंदी में बात करने की इजाजत चाहता हूं सभापति महोदय। जी सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे उस वक्तव्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें नियम 377 के तहत खतौरी, घटवाल, घटवार और अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया। हमें इसके लिए जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री का जवाब तो मिला है, लेकिन अब तक इस मामले में राज्य सरकार के कारण कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए आज मैं इतिहास के पन्नों से एक किताब का जिक्र करना चाहता हूं कि एक किताब जिसका शीर्षक है द लिटिल वर्ल्ड ऑफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसे आर कास्टेयर्स द्वारा लिखा गया है और 1912 में मैकमिलन एंड कंपनी लंदन द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में इस तथ्य का एक संपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि संथाल परगना 1855 में बनाया गया था और इसलिए यह बंगाल के सभी जिलों में सबसे छोटा था। लेखक द्वारा इसमें घटवाल, घाटों के संरक्षक और खतौरी आदिवासियों के दर्द का विवरण भी दिया गया है। कैसे 1790 में अस्थायी बंदोबस्त के समय उनके क्षेत्र के हर हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अस्थायी बंदोबस्त के समय इस पूरे क्षेत्र में एक भी संथाल आदिवासी नहीं था। भुइयां, खतौरी, हिंदू, मुसलमान, बड़े जमींदार सभी थे, पहाड़िया थे, लेकिन एक संथाल नहीं था। इतिहास के पन्नों में यह तथ्य गवाह के रूप में मौजूद है कि जब इन निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया गया था और जब यह किताब प्रकाशित की गई थी, तब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की व्यवस्था उस प्रकार से मौजूद नहीं हुआ करती थी जैसा कि आज प्रशासनिक रूप से यह अस्तित्व में है। इसीलिए हमारा मानना है कि सही मायने में इस क्षेत्र के मूल निवासी वे हैं जो अपने वास्तविक दर्जे व अधिकारों से वंचित हैं और अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता पाने का दावा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chair. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of State for Science and Technology to the urgent need to reconstitute the joint consultative mechanism within ISRO and the Department of Science. The JCM was introduced by the government as a negotiation mechanism for employees in government offices as far back as 1963. In the case of ISRO and DOS, a re-verification process is supposed to take place every 5 years, wherein employees can vote and elect 2 recognized service associations to the governing and administration councils of these 2 premier bodies. The elected service associations would then be qualified and authorized to participate in the JCM for a period of 5 years. However, the last verification process took place in 2014, and there has been no attempt to reconstitute such a process in the past 9 years under the present government. As a result, there currently exists no suitable negotiation forum to raise a number of legitimate and pending issues relating to employees' welfare, working conditions, and benefits. This has naturally had an adverse effect on the morale of employees who feel disenfranchised by the lack of a consultative platform to air their grievances. I therefore urge the Minister to reconstitute the process of the JCM within ISRO and the Department of Science so that there is a democratic way of dealing with issues of employees regarding improving safety, security, health and welfare, and to ensure that you can increase productive efficiency. Thank you, Mr. Chairman. श्री सुरेश कोटिकुनिल जी। Thank you, Chairman, sir. The suffering and agony of paddy farmers in Kutanad region, in particular, and Kerala state, in general, need to be addressed and resolved immediately. The paddy farmers of Kerala are given their dues as bank loan by means of paddy receipt sheet by the state agency Supplyco, and this impractical system has created untold miseries for paddy farmers, and paddy receipt sheet system must be revoked, and paddy farmers must be paid their dues indirectly in their bank accounts immediately after procurement of paddy. The central government must take immediate step in releasing any funds that are in arrears for the state government to disperse the arrears payout at the earliest. Compensation of 50 lakhs must be given to the families of farmers who have
committed suicide for not receiving bank loan due to adverse credit rating caused by the failure of state government in repaying PRS dues on time, which resulted in impractical CIBIL score of innocent farmers who were denied loans. The government must also declare a moratorium on repayment of loans to be repaid by paddy farmers of Kerala state till such a time the crisis of repayment of dues settled. Thank you, sir. श्री एडवोकेट दीन कुरियाकोस जी. Thank you, sir. Sir, due to the failure of Spices Board to support cardamom farmers in Kerala, I am demanding for establishment of a new cardamom board. Sir, the National Turmeric Board was established recently. However, a cash crop of great national importance, cardamom is still under the Spices Board. Sir, Idiki is the district that contributes more than 70% of cardamom production in India. It is an important crop that is an integral part of many cuisines across the country and the world. Sir, cardamom cultivation is beset with many challenges that require a holistic approach to solve. Unfortunately, the Spices Board doesn't support the farmers to the cultivation of cardamom. Sir, both the backward linkage like assistance for cultivation and forward linkage like marketing support is required to ensure the growth of cardamom cultivation in the country. Sir, cardamom cultivation and processing is a highly skilled agricultural enterprise that requires great research and extension support. Sir, the Spices Board is only marginally able to support this requirement. So, I humbly request and I urge upon the government to take immediate action in this regard and establish a new National Cardamom Board at the earliest. Thank you. डॉक्टर डी रवि कुमार जी. श्री डी रवि कुमार जी. प्रोफेसर सौगत राय जी. Sir, under Rule 377, I'd like to raise an important issue pertaining to West Bengal. Total central dues towards West Bengal under MGNREGA currently stands at above rupees 7,000 crores, that is 7,300 crores. The people of West Bengal feel sad that the union government is depriving us on this count. West Bengal government has appealed to the union government to release the funds for payment under the 100-day job scheme and not deprive the poor people of their legitimate dues. Despite being deprived of the central funds under the MGNREGA scheme, the state government has been able to create 10 lakh mandates under which jobs have been provided to 10 lakh numbers of job card holders. As regards, this is a case of extreme deprivation of the poorest people by the central government. As regards the housing scheme, PM Awas Yojana, both the union and state governments have their share of contribution under the scheme. We are being deprived of PM Awas Yojana funds also. Hence, I urge upon the government of India to take urgent steps to release the pending dues to West Bengal of MGNREGA and PM's Awas Yojana with immediate effect. We have demonstrated before the minister on this issue, but the government is not prepared to listen to us. Thank you. They will rather have us moved forcibly by the Delhi police rather than listen to the oaths of West Bengal. चंद्रशेखर बेलाना जी. जी. Sir, to help students from socially and economically backward classes, SC, ST, BC, and EBC, who wanted to pursue higher education abroad, the Andhra Pradesh government signature program, the Jagananna Vidya
Videshi Devana scheme was established. In accordance with this program, the Andhra Pradesh government covers the tuition for applications who are accepted to one of the top 200 universities. It covers the entire cost of the students' tuition if they are admitted to one of them top 100 institutions in the global. It also pay 50% or 50 lakhs of a student's tuition fee if they are accepted into one of the top 101 to 200 university in the global. While this process have increased the number of students from the socially and backward classes seeking higher education overseas. International education is still dominated by students from upper caste, as studying abroad requires a minimum of Rs 20 to 25 lakhs. Although there are number of scholarship programs and financial help schemes, it appears that establishment of national level funds dedicated to students express for higher education outside in India is important. As a result, I asked to get the government to make establishing national level funds to support socially and economically backward communities, educational and advancement of primary priorities. Thank you. श्री श्रीरंगप्पा बारने जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बावल के अंतर्गत जेएनपीटी पोर्ट के निर्माण के लिए सन 1985 में सेवा गांव की भूमि अधिग्रहण की थी और सेवा गांव को गांव में बांटा गया था। नवीन सेवा गांव को 10 हेक्टर और हनुमान कोलीवाड़ा सेवा कोलीवाड़ा को 0.2 हेक्टर भूमि पर ट्रांजिट कैंप के तौर पर देकर उरन के नजदीक बसाया गया है। जेएनपीटी के निर्माण के लगभग 33 वर्षों के उपरांत नवीन सेवा गांव के प्रकल्प बाधित नागरिकों को 361 भूखंड 33.64 हेक्टर भूमि देकर बसाना है और हनुमान कोलीवाड़ा सेवा कोलीवाड़ा गांव के प्रकल्प बाधित नागरिकों को 2.56 भूखंड देकर 70.33 हेक्टर भूमि देकर बसाने का इंतजार है। जेएनपीटी के यह मान्यता के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से ये दोनों गांव को नवीन सेवा और हनुमान कोलीवाड़ा को पुनर्वसन समझौते के अनुसार अतिशीघ्र भूखंड देने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री सुनील कुमार पिंटू जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं बिहार के सीतामढ़ी, जहां मां जगत जननी सीता जिस धरती से प्रकट हुई है, मैं वहां से आता हूं। नियम 377 के अधीन एक अति महत्वपूर्ण मामले को उठाने की आपने मुझे इजाजत दी, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में हो रहे कुछ त्रुटियों के प्रति मैं सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका एकमात्र लक्ष्य गरीब, वंचित एवं कम आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ परिवार अर्थात 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जिसमें 40% लोग जनसंख्या के जो निचले पायदान के हैं, गरीब हैं, अति पिछड़ा है। किंतु विडंबना यह है कि वही इस योजना के लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। जागरूकता का अभाव है या अवज्ञता का कारण भूलवश अगर उनके आयुष्मान में अगर कोई त्रुटि हो जाती है कार्ड में, नाम के स्पेलिंग, पता में, उम्र में, लिंग में, जिसके
कारण उनको सेवा से वंचित कर दिया जाता है। उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक कहीं ना कहीं हकमारी हो जा रही है। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करने की बजाय हॉस्पिटल उन्हें सेवा देने से मना कर देती है, जो कि उचित नहीं है। इस योजना के साथ साथ सरकार में भी इसका विश्वास कमजोर हो जाता है। इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना के प्रति जागरूकता लाई जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका समुचित इलाज किया जाए और दस्तावेज या भूलवश त्रुटि को जिसमें सुधार संभव है उस कारण से इलाज न करने का कोई भी हॉस्पिटल इस प्रकार से मना न करे। ऐसे ही होने से इस योजना की सफलता सुनिश्चित हो पाएगी और जो माननीय प्रधानमंत्री का है कि हर गरीब दबे पिछड़े लोगों का इलाज हो सके मुफ्त में, वो संभव हो पाएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भर्तृहरि मेहताब जी। Thank you, Chairman, sir. Access to tap water is a basic necessity of every household. To ensure universal access to tap water in rural areas till the year 2024, the government had initiated the Jal Jeevan Mission. However, it is falling short of achieving its objective within the said time frame. Although the progress made under the scheme is acknowledged, the target of providing tap water connection to 19 crore 36 lakh rural households till the year 2024 seems a distant reality because only 1 lakh households have received a tap water connection as of now. About half of the target number has been achieved in 4 years since the scheme was launched in 2019. Keeping this in mind, the claims of the government that rest of the target number can be achieved in just 1 year seems highly improbable. Though the Jal Jeevan Mission has received a hike in the 23-24 union budget, it is only so useful as out of 60,000 crore of rupees allocated for the mission in 22-23, only 22,774 crores have been released to the eligible states and union territories till December 2022. Therefore, what is needed is a better implementation of the scheme at the ground level and an expedited release of funds by the center so that universal access to tap water in rural areas can be made a reality in near future. Thank you, sir. श्री रितेश पांडे जी नहीं है। श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल नहीं है। पटेल जी। सर मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया। मैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठा और धनगर इन दोनों बड़े समाजों के आरक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में बोलने पर खड़ा हूं। पिछले 10-12 साल से मराठा समाज और धनगर समाज आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र ने 4 राज्य सरकारें बदलती हुई देखी है। हर बार आंदोलक समाज और विरोधी दल सत्ता पक्ष पर दबाव डालते हैं। सत्ता पक्ष कोई कमेटी या कमीशन गठित करता है और मामले को खींचते खींचते उस सरकार की टर्म के आखिरी महीनों में आरक्षण किसी की तरह से घोषणा कर दी जाती है। आगे चलकर कोर्ट किसी न किसी बहाने कानून के मुद्दे पर खारिज कर देता है। तब तक सरकार बदल चुकी होती है और पूर्व सत्ता पक्ष अगले सत्ता पक्ष को दोषी ठहराता है। ये दुष्ट चक्र पिछले 12 सालों से चलता हुआ है। कानून के विशेषज्ञों को कहना है कि इन आरक्षणों की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इस विषय पर लंबे समय से मौन में है। आपने विषय कुछ दूसरा महाराष्ट्र इतिहास काल से एक सामाजिक समता, बंधुता
और सुधारवाद की भूमि रहा है। इन दोनों समाजों को मान्य आरक्षण संबंधी मांगे योग्य है, इस पर भी महाराष्ट्र में सभी कभी सकारात्मक मत है। मराठा समाज केवल 150 या 200 सांसद या विधायक चुने जाते हैं, इसलिए करोड़ों मराठे को शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन का नकारना गलत है। इसी तरह से करके दिया है केवल धनगर और दंडनीय शब्दों के लिए भिन्नता की वजह से मैं थोड़ी सुधार कर रहा हूँ। आपने नहीं आपके परमिशन सुधार करता हूँ, क्योंकि ये मामला बहुत जोरों से महाराष्ट्र चला है। जो लिखा हुआ था भारत सरकार में आप तो बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, दो लिखा हुआ होता है। इन दोनों समाजों के प्रश्नों को करना है और अधिक समय दिए तो अनदेखा करना महाराष्ट्र भविष्य के लिए चिंताजनक हो सकता है। सभी देख रहे हैं कि हर दिन आए दिन महाराष्ट्र में चल रहे परस्पर विरोधी आंदोलन, सभा, भाषण और वक्तव्य की वजह से सामान्य जनों के मन में वही जाएगा जो आपने लिख करके दिया है। माहौल पैदा हुआ है। इसको आप शून्य में मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप इस गंभीर विषय को उच्चतम प्राधान्य में कानून सुयोग्य संशोधन करें और इन दोनों समाजों का आरक्षण संबंधी मांगे पूरी करने के लिए तुरंत कदम उठाए। महोदय, आपने मुझे जो मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। पहले मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें थोड़े सुधार करके जो अनुमति दी, इसलिए मैं राम मोहन आभारी हूं। Thank you, Chairman, sir. Thank you, Chairman, sir. I wish to raise the issue of cashew crisis unfolding in my district of Srikakulam. Andhra Pradesh is one of the biggest exporters of cashews in India, and Palasa in Srikakulam has more than 1 lakh acres for cashew cultivation managed by mostly small and marginal farmers. Cashew plantations start bearing fruit after 3 years of planting and require proper care to bear fruits. Farmers have borne rising expenses of up to 30,000 rupees annually while selling their produce for prices as low as 5,000 rupees, barely even earning 1/5 of their expenses. Moreover, introducing cheaper cashew kernels from countries like Vietnam and other countries has further dropped the prices in the market, thereby compounding the losses suffered by local farmers. I urge upon the government to step in and provide immediate relief to over 30,000 farmers of Srikakulam by fixing an MSP for cashews after consulting local farmers. Furthermore, the government must reimpose a 5% import duty on foreign cashews to reinvigorate local cashew sales and set up a cashew board to supervise the implementation of such changes at the earliest to ease the burden of the local cashew farmers. Thank you, sir. श्रीमती नवनीत राणा जी, श्री रितेश पांडे जी, धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 के किनारे मालगाड़ी से माल उतारने की व्यवस्था पूर्व में हुआ करती थी। इस रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार होने के कारण यह रैक पॉइंट समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से अंबेडकर नगर से रेलगाड़ी से माल लोड करना या उतारने की कोई सुविधा अब नहीं बची है। इसके कारण क्षेत्र के व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और किफायती परिवहन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे आम जन को अपना माल का उचित दाम और बाजार भी नहीं मिल पाता है। अकबरपुर जंक्शन पर रेलवे रैक पॉइंट की उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए जनता आंदोलित और आक्रोशित है। मेरी माननीय रेल मंत्री से यह मांग है कि लोकसभा अंबेडकर नगर के अंतर्गत अकबरपुर में विस्तारित प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बगल बची रेलवे की शेष जमीन पर रेलवे रैक पॉइंट की उपलब्धता कराई जाए, ताकि पुनः माल का यातायात अंबेडकर नगर जिले से सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदम्बिका पाल जी, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन एक अत्यंत लोक महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान बुद्ध के जन्मस्थान कपिल वस्तु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कपिल वस्तु बौद्ध परिपथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
पर्यटन एवं आस्था की दृष्टि से ये बौद्ध परिपथ सर्किट बनने से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वालों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही सरकार ने अपने उड़ान योजना से जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, उसमें भी इस क्षेत्र को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात है। इसके फलस्वरूप चाहे वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान के सब जगह के जो बौद्ध के मानने वाले पर्यटक हैं, वो दुनिया भर के पर्यटक इस क्षेत्र का दर्शन करते हैं। और बौद्ध सर्किट जिसमें कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, बोध गया है, सारनाथ और श्रावस्ती शामिल है। ये स्थल वर्तमान में लगभग राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले टोटल विदेशी पर्यटकों के 6% के बराबर है। तो एक बड़ी संख्या है। इन सभी स्थलों में एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो चुकी है, लेकिन जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु, आज भी वो अभी एयर कनेक्टिविटी किसी इससे नहीं है, जिसके कारण बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती नहीं जुड़ पा रहा। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि बौद्ध पर्यटन के लिए समृद्धि है कपिलवस्तु में भी जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, उसमें एक हेलीपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे हम बौद्ध परिपथ की पूरे उस बुद्ध सर्किट को अभिगम्यता को बढ़ा सकें। मैं आपके द्वारा सरकार से बुद्ध के जन्मस्थली कपिलवस्तु में उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के हेलीपोर्ट को स्थापित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री नारायण भाई कजारिया जी। सभापति महोदय, मुझे 377 पे बोलने का अवसर दिया तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव केवीएस संगठन की ओर से अनुमोदित अप्रूवल दे दी गई है, परंतु अब तक चैलेंजिंग मेथड कमेटी की और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग न होने के कारण अब तक विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु मंत्रालय की ओर से अंतिम आदेश लंबित है, जिसके कारण विद्यालय के निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में देरी हो रही है। उक्त विलंब के विद्यार्थियों का पठन पाठन कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए केवीएस रीजनल कार्यालय द्वारा अमरेली में स्थित एक भवन के स्थायी रूप से केंद्रीय विद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी केवीएस मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है। उक्त दोनों कार्यों की अंतिम मंजूरी चैलेंजिंग मेथड कमेटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग अति आवश्यक है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द चैलेंजिंग मेथड कमेटी एवं पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए, जिसके उक्त दोनों प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्राप्त हो सके और अमरेली में एक केवीसी स्कूल का माध्यम से विद्यार्थियों का बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री उन्मेष पाटिल जी जी। Thanks a lot, Chairman sir. The government has launched the National Logistic Policy, which aims to cut logistic costs by half to be near global benchmark by 2030. Sir, by reducing the cost of the logistic from 14 to 18% of the GDP to global best practices of 8%, this policy will benefit Maharashtra, my state immensely, and will also help to increase creating employment opportunities. The government has also proposed a multimodal logistic park in my parliamentary constituency of Jalgaon, which is well connected through a network of roadways, railways, and airways. Jalgaon has immense potential since it has multiple export units and food processing facilities. Due to large-scale production of crops, pulses, banana, grapes, onion, lemons, and as well as gold too. Additionally, there is ample availability of the vacant government land, which can be utilized for setting up a logistic park in Jalgaon. I request the government to sanction a multimodal logistic park in my parliamentary constituency of Jalgaon, which will result in cutting down on transport cost, leading to reduction in cost of goods. This will in turn benefit industries and consumers and create employment opportunities for the people of Jalgaon and provide impetus to the economic development and overall growth of the Jalgaon. Thank you, sir. डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी नहीं,
श्री मितेश पटेल। सभापति महोदय, मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा के लिए श्री अन्न नाम देकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार आम लोगों तक इसे पहुंचाने का अभियान चला रही है। इस दौरान सभी मंत्रालयों को इस अभियान से जोड़ते हुए उन्हें इस पूरी मुहिम को और रफ्तार देने के लिए भी कहा गया है। श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है इसके उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना एवं किसानों को इसके लिए आसान बाजार उपलब्ध करना, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रयास जारी है। महोदय, मेरी सरकार से विनती है कि श्री अन्न जो कि गेहूं और धान की अपेक्षा कम पानी, लागत और मेहनत के उपजाया जा सकता है, जिसमें बदलते जलवायु के कारण सूखे में भी उत्पादन की बढ़िया संभावना है, उससे किसान दूर क्यों होता गया, इस बारे में पूरे देश के किसानों के बीच सर्वेक्षण करवाएं। इसके उत्पादन में कठिनाइयां एवं उत्पादन उचित होने पर भी इससे किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में पूर्व की सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण से किसानों की उदासीनता को उत्साह में बदलने हेतु कदम उठाए, जिससे श्री अन्न भारत की एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान बन सके। धन्यवाद। डॉक्टर डी रवि कुमार जी। नहीं। श्रीमती नवनीत राणा जी। हो गया। नाउ आइटम नंबर 9, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद डिप्टी चेयरपर्सन सर। With your permission, I move that the bill further to amend the Advocate Act 1961 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. कुछ बोलना आपकी? जी धन्यवाद जी। सर, ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा 5-10 मिनट में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री में बताना चाहता हूं। ये आजादी से पहले इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 था, फिर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। इसका पर्पस था कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है या लीगल प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो लीगल प्रोफेशन में जो काम करते हैं, वकील लोग हैं, उनका कोई रेगुलेशन, इसलिए एक्ट बना। फिर 1879 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया, उसमें एक सेक्शन 36 है जिसमें टाउट्स का जिक्र आता है। टाउट्स का मतलब ठगी करने वाला, कुछ गलत बात करके और कि मैं वकील हूं, वकील होता ही नहीं है, इस तरह के सब जो काम करता है उसके लिए टाउट शब्द यूज हुआ है, या दलाली भी कह सकते हो। इसके बाद 1920 में बॉम्बे प्लीडर एक्ट बना। क्योंकि आप तो इतिहास के बड़े जानकार हो सर, आप जो चेयर पे विराजमान हैं, तो फिर 1936 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट भी आया। जब देश आजाद हुआ तो विचार आया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिए, और जो अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं उसके अनुसार हमें क्यों चलना। हमारा लीगल प्रोफेशन भी एक नोबल प्रोफेशन है। इसके लिए लॉ कमीशन को ये मैंडेट दिया गया कि हम नई परिस्थितियों के अनुसार जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा रिफॉर्म करें। फिर ऑल इंडिया बार कमेटी भी बनी। इसके लिए उन्होंने कहा एक कमेटी और बना दो। फिर 1953 में जब ये कमेटी बनी, उसके कुछ सिफारिशें आई, और उसके बाद एडवोकेट एक्ट 1961 आया, जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं।
और इसका मूल पर्पज रहा लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने का। इसमें बहुत से सुझाव आए कि भाई इसको रखना जरूरी है क्या, तो इसमें एक सेक्शन है 45A जो इस वर्तमान में जो बिल लेकर आया हूं वो इसमें इंसर्ट करता है। और उस समय जो टाउट्स को लेकर सेक्शन 36 था उसके बारे में ये कहता है कि इसकी जरूरत है, एक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 36 है जो टाउट्स का जिक्र करता है उसकी जरूरत है, ऐसा विषय आया। और लोगों ने कहा कि ये इसकी जरूरत इसलिए है कि न्यायालय परिसर में दलाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में एक कमेटी बनी थी जिसके लिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के कमेंट भी लिए गए थे। इसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी सुझाव लिए गए। सभी ने ये बात मानी कि एडवोकेट एक्ट में संशोधन तो हो, ये जरूरी है, लेकिन इसमें टाउट से संबंधित प्रावधान अवश्य रखे जाने चाहिए, क्योंकि न्यायालय परिषद में दलाली ठीक नहीं है। जो ठगी करते हैं या जो दलाल टाइप के लोग यहाँ आते हैं, ये ठीक नहीं है। दलाली कहीं भी ठीक नहीं है, कहीं भी ठीक नहीं है। और इस समय तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। जी। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है। जब हर जगह साफ सफाई का काम होना चाहिए तो न्यायालय परिसर भी साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए मैं आपके समक्ष ये बिल लेकर के आया हूं। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 रिपील कर दिया गया है, और क्योंकि कॉलोनियल एक्ट है इसलिए, और फिर इसमें ये संशोधन में लेकर के आया हूं कि टाउट्स में इसकी जरूरत है। इसमें एक कमिटी, इसमें हाई कोर्ट के जज हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, इवन कलेक्टर भी इसमें देखेंगे कि ये आदमी बार बार घूम रहा है, ठगी का काम करता है, तो उसकी एक लिस्ट बना देंगे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसमें मदद करेगा। लिस्ट फिर वो चस्पा कर देंगे। फिर भी वो लिस्ट में चस्पा होने के बाद भी अगर वो न्यायालय परिषद में पाया जाता है तो 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये मैं छोटा सा एक अमेंडमेंट इसमें लेकर के सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे लगता है कि सदन जो इसमें सार्थक चर्चा करके और इसको सर्वसम्मति से पास करेगा, और जो चर्चा होगी उसके बाद जैसे आप आदेश मुझे करेंगे तो मैं जवाब देने के लिए फिर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। श्री कार्ति चिदम्बरम जी। Thank you, sir. Intermediation is part of our Indian culture. People sometimes always want an intermediary to go between them and whoever they are dealing with. It's a normal part of our culture. We have intermediation in marriage alliances. So this is sometimes in rural areas and in other parts of the country, people need intermediation to even to reach out to people in authority and power. There are intermediation even in political parties, we know that. By and large, we welcome this bill, sir. Let me be very clear about that. Sir, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This is what Martin Luther King said. The right to seek justice is a fundamental right to our existence as a civil society. But because of the asymmetry in our society in terms of education, access to people in authority, wealth, an average person sometimes does not know how to navigate the legal system. This is what is being exploited, and some people step in as touts to tell them who to engage, tell them if you engage this lawyer, this will work. So that is where, because of this asymmetry and the complexity of dealing with our legal system, touts thrive. So these intermediaries thrive. In fact, there is a funny joke, which I will say, and I hope the lawyers don't get offended, because I'm a lawyer myself and my parents are lawyers. I come from a family of lawyers. I say this with full responsibility. The joke is that good lawyers know the law, but great lawyers know the judge. So when that is the system, when an uneducated person has to come to court, it is quite natural that somebody has to intercede to help them navigate and help them connect with the right lawyer. This is what is happening everywhere. Because of this, many people flourish.
My only quibble with this bill is that, sir, it is targeting the tout in these small courts, the real small tout. In fact, there is in Tamil Nadu, there is a person whose name I don't want to mention, but anybody in the legal fraternity in Tamil Nadu will completely know. Let's call him Judicial X. His specialty is to take temple prasad to every single judge and to be photographed. People say that he can get the matter listed before a particular judge. Now the grapevine is that he can even appoint judges to the court. In fact, I would urge the government to focus on these big fish instead of these small touts who are all operating only in the smaller courts. There is a nexus between touts and lawyers.
उल्लेख किया है कि आज हम उसमें किस तरीके से उस एक्ट में हम जो सेक्शन 36 है वो हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट हमारी सरकार का है, देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है कि कॉलोनियल लिगेसी के जितने कानून होंगे या जो चीजें होंगी उसको उन्होंने पंच प्राण के में किया था। उस लाल किले से जो 5 उन्होंने प्रण लिए थे उसमें रेड फोर्ट से यह भी कहा था कि हम वो ब्रिटिश की गुलामी की दास्ता की विरासत को न केवल समाप्त करेंगे, अपसलीट कर देंगे। तो आज तो इसको बधाई देना चाहिए। अरे भैया, यू मस्ट हैव पेशेंस, आई थिंक सो, काइंडली इफ यू लिसन टू मी, आई थिंक सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। आई थिंक यू टॉक टू योर अधिष्ठाता जी। चलिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे भाई मैं लीगल टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत तो कोई आक्षेप किया नहीं, मैं तो केवल इस अपने अमेंडमेंट एक्ट पे बात कर रहा हूं। अब प्रधानमंत्री जी का नाम लेने से अगर उनको चिढ़ हो रही तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री को उनकी गारंटी को मान लिया है। अब ये कितना भी चिढ़ते रहे और जिस तरीके से तीनों राज्यों में परिणाम आया है, अब इनको सोचना चाहिए। अब इनके नेता का क्या बयान है? नेताजी कहते हैं कि ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मोदी जी की जीत है। मैं धन्यवाद दूंगा धीर रंजन जी को, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी के नेतृत्व में है वो जीत है, तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा। नहीं धीर रंजन जी, आपने इसको चैनल पे कहा है, इसको आप चैनल, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी बारी आएगी तो आप कह दीजिएगा, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं ईल्ड नहीं, ये तो आपने आज चैनल में कहा है सौगत राय जी, ये तो मैंने, अच्छा नहीं, मैं ये बात जो कह रहा हूँ तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तब आप अपनी बात कह दीजिएगा, उसका भी उल्लेख कर दीजिएगा। ठीक है, बैठिए। अरे भाई, पंच प्राण जी सुन लीजिए, जिनके नाम दिए हैं उन सबको मौका दे दिया जाए। धन्यवाद महोदय। मैं पंच प्रण की बात कर रहा हूँ कि पंच प्रण में जो उन्होंने कहा, ऑल दीज एक्ट्स आर पार्ट ऑफ colonial legacy, तो ऑल दीज एक्ट्स आर पार्ट ऑफ colonial legacy। Modi ji in his speech and pran from the Red Fort talked about giving up the colonial legacy। इसको समाप्त करने का फैसला लिया है, आज उसका अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लॉ मिनिस्टर को कि उन्होंने इस तरीके का एक कम से कम कॉलोनियल लिगेसी को खत्म करने का काम किया। आखिर हम आज उसी को ऑब्सलीट कर रहे हैं जिसको आप वेलकम कर रहे हैं। जो एक्ट हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का है, तो ये एक्ट को एवालिश करने में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उस पर भी सदन चर्चा करने में धन्यवाद देता हूं कि सदन में अच्छे ढंग से कार्रवाई चल रही सुचारू रूप से। अभी चिदम्बरम ने बहुत अच्छी बात दिया उदाहरण। उन्होंने कहा क्या रे साहब, गुड लायर्स नो लॉ एंड ग्रेट लायर्स नोज ओनली जजेज। तो आई थिंक सो, आप तो उस फैमिली के हैं तो क्या कहूँ, हम तो आपको ग्रेट लायर मानते हैं, तो क्या आप जज को जानते हैं या गुड लायर? मुझे लगता है सभी लॉ कानून को जानते हैं। ये डिफरेंशिएट करना निश्चित तौर से किसी वकील का अपमान होगा कि हम केवल जज से न्याय लेते हैं, तब मुझे लगता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिस एक्ट एबॉलिशेस द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879 एंड एक्ट दैट डेट्स बैक। ये कितना पुराना कानून, 144 साल, सब 144 ईयर्स एगो ये कानून आया था, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। उसके बाद क्या आया? बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट आया 1920, फिर उसके बाद इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 आया। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 में क्या क्या प्रोविजन थे जो आज एक तरह से लोगों के ऊपर अगर लगेगा तो लगेगा कि गुलामी की दास्ता की प्रतीक थी। या चाहे लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 रहा हो, या बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट 1920 रहा हो, या इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 रहा हो। तो आज आप ये बताइए कि जब देश आजाद हुआ था, आज तो लोग जाति की राजनीति करते हैं, पार्टी की राजनीति में सांप्रदायिकता करते हैं, उस आधार पे खोज के वोट टिकट देते हैं। पहले देश में प्रायः इन सदनों में आने वाले लोग जिस तरह से थे वो लॉ बैकग्राउंड से ही थे। चाहे भीमराव अम्बेडकर जी का नाम मान लीजिए, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी को मान लीजिए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मान लीजिए, ये कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी थे। तो इस तरीके से जो लोग उस समय सारे लोग प्रैक्टिस में इस तरह के, उनको ये महसूस हुआ कि हमें कोई ना कोई एक एक्ट ऐसा बनाना चाहिए जिससे हो, और उसी के नाते एक एडवोकेट एक्ट 1961 बना देश में आज़ादी के बाद, क्योंकि इस बात को राजेंद्र प्रसाद जी ने महसूस किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, B.R. अम्बेडकर जी ने किया। तो ये टाइम के साथ हुआ, जब समय कालांतर में बीतता रहा
और जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के हीरो थे, जो हमारे इंडिपेंडेंस के जमाने में मूवमेंट में जुड़े हुए थे, वो तमाम ऐसे लोग, एक लंबी श्रृंखला है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसके बाद उन लोगों ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को बनाने के बाद जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को, लॉ कमीशन को भी, हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, सब स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन किया गया और सारे लोगों के कंसल्टेशन के बाद एक कंप्रहेंसिव टाइप का एक्ट उन्होंने एडवोकेट एक्ट 1961 में बनाने का तय किया। तो अब जब एडवोकेट एक्ट 1961 बन गया, आज हम इस लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को इसको ऑब्सोलीट कर रहे हैं। केवल इसका जो एक सेक्शन था लिस्ट ऑफ टाउट्स, तो आई थिंक सो उसी को ऑब्सोलीट नहीं किया कि हम अभी भी देश की आजादी के बाद लिस्ट ऑफ टाउट्स के खिलाफ कोई हम एक्ट न बनाएं, कोई कानूनी प्रावधान न दे। अभी भी गांव का गरीब आदमी अगर अपने कानून पाने के लिए आए और वो बीच में उस कचहरियों में, कोर्ट में अगर उन टाउट से, दलालों के चंगुल में फंस जाए, और जिस तरीके से आप देखते हैं आज कि आप स्टेशन पे उतरते हैं या कहीं बस स्टेशन पे या कहीं कोई मरीज आता है, तो किस तरह से आज उस फील्ड में भी वो टाउट लगे रहते हैं कि नहीं आप इस हॉस्पिटल में चलिए, आप इस डॉक्टर के पास चलिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के न्याय, जो सबसे बड़ी न्याय प्रक्रिया कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय केवल मिलना चाहिए नहीं बल्कि ये प्रतीत भी होना चाहिए कि लोगों को न्याय मिल रहा। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने देश में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो आज वो स्वच्छता अभियान अगर न्यायिक प्रक्रिया में शुरू हो रहा है तो मैं तो अपील करूंगा कि पूरे सदन को सर्वसम्मत से इसको पास करना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि इसके पहले भी हमने रिव्यू किया है, जो हम जन विश्वास बिल लेके आए थे, उस जन विश्वास बिल में भी जिसमें 183 प्रोविजन थे, उस 183 प्रोविजन में अक्रॉस 42 एक्ट्स ऑफ 19 मिनिस्ट्री, तो देश ने तो शायद एक इतिहास बनाने का काम किया है। और आप सौभाग्यशाली, आप साक्षी हैं, चाहे हम कहीं बैठे हो, कि आप उसके साक्षी हैं कि उस कॉलोनियल लिगेसी के जो 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट ऐसे थे जिसमें केवल ब्रिटिशर्स की मतलब उस दास्ता को परिलक्षित करता था और उन्होंने अपने इंटरेस्ट में बनाया था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन सारे 19 मिनिस्ट्रीज के 42 एक्ट के 183 प्रोविजन को ऑब्सोलीट करके देश को एक स्वच्छता देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये बात तो उसी दिशा में और आगे पहल की गई। और ये जो आज इस बिल को लाए हैं, इस बिल के लाने से निश्चित तौर से एक फायदा ये भी होगा कि ये दिस एक्ट, yeah, this is not a singular legislation. This is a piece of comprehensive mission of the government to remove all obsolete laws in the country. ये तो क्लैरिटी है, मानिए क्लैरिटी क्या है कि हम इस देश में जो भी हमारे एक्ट में है चीजों का, गवर्नमेंट कमिटेड है, सरकार प्रतिबद्ध है कि हम जो भी ऑब्सलीट लॉ हैं उनको हम ऑब्सलीट करेंगे जो इस तरीके की चीजें हैं। आज मैं कहता हूं कि ये आज का जो अमेंडमेंट बिल है, ये अगर कोर्ट में उस न्यायिक प्रक्रिया में शुचिता और पवित्रता का काम करेगा, या जिस तरीके से रिमूवल ऑफ टाउट्स फ्रॉम कोर्ट प्रीमाइसेज करेगा, और इसका अधिकार किसको होगा? सरकार को नहीं होगा। उस प्रीमाइसेज में टाउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस टाउट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कौन इसमें करेंगे? इसको करने के लिए जो मिशन है, जो पावर दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को है, हाई कोर्ट के जज को है। ये साफ है कि की फीचर्स ऑफ द बिल इंक्लूड कि टाउट्स के लिए द बिल प्रोवाइड दैट एवरी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे आईएएस जूनियर हो, वो आईएएस जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, मुझे रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुकिंग आफ्टर ऑल द रेवेन्यू केसेज एंड रेवेन्यू अफेयर, ही विल बी ओनली दिस पावर, ही कैन एक्सरसाइज दिस पावर, या तो हाई कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज। और जिस तरीके से ये अधिकार तो उन्हीं न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए, कोसी जुडिशियरी से जुड़े हुए लोगों को दिया गया है। ये कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ये कोई सरकार के या प्रशासन के हाथ में नहीं आ रहा है कि जो हम किसी को टाउट बना देंगे या किसी के खिलाफ आइडेंटिफाई करके हम उसको पेनलाइज कर देंगे या पनिशमेंट कर देंगे। ये हमने सीधे सीधे ये अधिकार
हाई कोर्ट के जजेज को दिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज को दिया है, सेशन जज को दिया है, और रेवेन्यू में जो रेवेन्यू में मुकदमे देखते हैं उनको दिया गया है। आप देख लिए। और मैं समझता हूं कि टाउट रेफर्स टू ए पर्सन हु procures the employment of legal practitioner in a legal business in return of any payment, ये तो साफ है। And frequent places such as the premises of civil or criminal courts, revenue offices or railway stations to procure such employment, इस तरीके जो घूम करके गरीब लोगों का या अपने उन मौकिल का या जो न्याय पाने के लिए हैं उनको जिस तरीके से लेकर के उनका एक्सप्लॉइटेशन है, तो मुझे लगता है कि ये तो ऐतिहासिक कदम है। ये कानून केवल एक जगह नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट और नीचे के कोर्ट में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में इस कानून के अमेंडमेंट होने के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए स्वच्छता आएगा, ये देश के लिए ऐतिहासिक वरदान साबित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि the court or judge may exclude from the premises of the court any person whose name is included in the list of the tout. And preparation of the list देखिए क्या है। Preparation of the list, the authority is empowered to frame and publish the list of touts may order subordinate court to hold an inquiry into the conduct of persons. ऐसा नहीं कि किसी इनोसेंट आदमी को या किसी साधारण आदमी को भी इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो उनको एक पूरा प्रॉपर इंक्वायरी होगी, कोर्ट्स टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट, उसके कंडक्ट के बारे में, अ पर्सन्स एलिज्ड आर सस्पेक्टेड टू बी टाउट, मतलब जिसके बारे में ये होगा कि ये कोर्ट में लगातार है और ये टाउट्स की भूमिका निभा रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोग दलाली काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को उनके कंडक्ट की इंक्वायरी होगी, उनके सस्पेक्ट में, तब उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई होगी। Once such a person is proven to be a tout, his name may be included by the authority in the list of the touts. No person will be included in such list without getting an opportunity or showing cause actions his inclusion. ऐसा भी नहीं कि किसी का नाम डाला जा सकता है। पेनाल्टी साफ है कि any person who acts as a tout while his name is included in the list of touts will be punished with imprisonment up to the 3 months and a fine up to ₹500 or both. तो इस तरह से मानवर कम से कम पहली बार जो आज हम उस एक्ट को एब्सोल्यूट कर रहे हैं, उस एक्ट के एब्सोल्यूट करने के बाद जिस तरीके से है, पहले के कैसे वकील थे आपको याद होगा। मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, कल्याण जी बात के महर्षि अरविंद का केस हुआ था, खुद सीआर दास जी ने खुद अपनी सर्विसेज उनको दिया था। हमारे अधिवक्ताओं की इतिहास को देखा जाए तो शायद संरक्षणों में कि ये नहीं है कि कोई किसी को के पास ले जाने की जरूरत है। महर्षि अरविंद के खिलाफ केस हुआ, उसमें वो नहीं थे, तो इसके बावजूद सीआर दास जैसे एडवोकेट ने उनको जिस तरीके से अपनी सेवाएं दिया और उनके लिए किया, तो आज हमारे अधिवक्ताओं का इतिहास एक अपने आप में बहुत बड़ा है। और इससे एक कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो अपने इस एक्ट से रेगुलेट करेगा, गवर्न करेगा, पूरे देश के जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है इन दिस कंट्री उसको करेगा। और केवल ये बिल जो पेनलाइजिंग है वो केवल द प्रैक्टिस ऑफ टाउटिंग अंडर द एडवोकेट्स एक्ट, कि एडवोकेट्स एक्ट के नाम के अंतर्गत अगर वो कोई टाउट करते हैं या इस तरीके काम करते हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है। और जिस तरीके से आप देखिए कि इस बिल को कितनी चर्चा करके लाया गया, दिस लेजिस्लेशन वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में देखा जाए तो इन इट्स रिपोर्ट 249 टाइटल ऑब्सोलीट लॉज एंड वारंटिंग इमीडिएट रिपीट, तो इस तरह से ये ऑलरेडी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट 249 में भी एक तरह से रिकमेंड किया है सरकार के लिए कि इसको किया जाए, ऑब्सोलीट किया जाए और इसमें इमीडिएट रिपील करने की एक मतलब अपेक्षा की गई है, उसी को सरकार उसके अनुरूप लेके आ रही है। और जिस तरीके से इस कानून को लाने के पहले इस सरकार ने इस बिल पे सभी जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, चाहे जो लीगल प्रोफेशन में लगे, आखिर इंडिया का सबसे लीगल प्रोफेशन कौन है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मतलब ये नहीं है कि कोई अपने आप सरकार ने इस कानून को लाने की बात की, जो सीधे जुड़े हुए हैं देश भर की न्यायिक प्रक्रिया में, जो अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले अधिवक्ता हैं,
जो न्याय देने की न्याय की प्रक्रिया या उसको व्याख्या करने वाले उन कोर्ट्स में हमारे अधिवक्ता हैं, उनके उस सबसे बड़े बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी हमारी सरकार ने एक कंप्रहेंसिव बिल बनाने के लिए उनसे कंसल्ट किया। और उसके बाद इस कंसल्टेशन के बाद जो एक इसमें शामिल करने की बात आई कि टाउटिंग इन द लीगल प्रोफेशन इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द प्रोफेशन, मतलब स्वयं अधिवक्ताओं ने माना कि ये न्याय में जो हमारे है, इस न्याय के जो स्पिरिट है, जो भावना है, जो हमारे प्रोफेशन की भावना है कि हम क्या है किसी एग्रीव्ड को न्याय दिला सके। अधिवक्ता क्या करता है कि अगर कोई एग्रीव्ड है या कोई थोड़ा मैं जल्दी कंक्लूड कर दूंगा, तो इस तरीके से है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खुद ही हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें केवल जो 1961 का हमारा अमेंडमेंट है एडवोकेट्स एक्ट में, उस 161 के एक्ट में हम केवल सेक्शन 36 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो 36 इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं इसमें कि सेक्शन 30 जो लिस्ट ऑफ द टाउट्स है उसको हम पेनलाइज करने के लिए या न्यायिक प्रक्रिया की स्वच्छता के लिए इसमें जोड़ना है। और ये बिल जो रिपील कर रहा है कुछ सर्टेन सेक्शंस है जो पूरे बिल को तो हम उस समय के उसको रिपील कर रहे हैं, केवल इसमें जो सर्टेन सेक्शंस रिलेटेड टू टाउट्स अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का है, जिसको कि हम आज हमारे माननीय मंत्री जी लेके आ रहे हैं उसको एक तरह से अपसीलिट करने की, लेकिन उसके एक सेक्शन को सेक्शन 36 को इसमें जोड़ने के लिए किया है। तो नाउ द 1961 एक्ट कंसोलिडेट्स द लॉ रिलेटेड टू लीगल प्रैक्टिशनर एंड कंस्टिट्यूट्स बार काउंसिल एंड द ऑल इंडिया बार काउंसिल। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज ये सदन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जब पूरा देश इस बात के लिए साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा कि पूरे देश में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में छोटे कोर्ट से लेके तहसील के से लेके मुंसिपल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से लेके सेशन जज के कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सभी कोर्ट्स में एक न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी टाउट के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी इंटरमीडिएटरी के अगर किया जाए, ठीक है मैम, धन्यवाद, तो बिना किसी इंटरमीडिएटरी किया जाए तो मुझे लगता है मैं अपील करूंगा कि सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों इस बिल को सर्वसम्मत से पारित करें। धन्यवाद। जय हिंद। श्री ए राजा। Sir, thank you very much for the opportunity that has been offered to me to speak on this small amendment. Sir, when this parliament discussed the 42nd amendment, the biggest controversial amendment, it was said that the legislative competence of the parliament cannot be questioned in the court of law. That triggered the controversy. Ultimately, it was settled down later by the virtue of 44 amendment. The legislative capacity of the parliament cannot be questioned in those days. That was nailed down. Now, the capacity of parliament's capacity of legislation became a mockery through this bill. Sir, I do not know how this bill was drafted without giving any due care for the legislative competency of this parliament. Sir, ever since this government, BJP government came into power, the parliament is being misused. Most of the state subjects were brought to here for enactment of laws encroaching the state power. Ultimately, state autonomy became laughing stock. Cooperative federalism becomes the laughing stock. Sir, it is a small bill, but I am not able to understand the way in which the nationalism was put up everywhere, even in the Advocates Act. The Honorable Minister says colonial law. Yes, colonial law, 1879, the provision is there. You want to repeal it. But by way of repealing, you are introducing the same section, importing the same section in the new law. What does it mean?
Is it not anti-colonial or colonial law? I'm not able to understand the rationality behind the government to bring this law. Again, sir, the simple reading, how a person can be listed as a tout. Explanation, I quote, the passing of a resolution declaring any person to be or not to be a tout by majority of the members present at the meeting. Who are all the members in the committee? Nothing mentioned. Who are all the members? Then, by evidence of general repute, by evidence of the general repute, evidence must be tendered by a person who is having reputation in the society. All right. The next sentence is very dangerous. Or otherwise. What happened Article 356? On the recommendation of the governor, a state government can be dismissed on recommendation of the governor or otherwise. That otherwise was used by the president when the Tamil Nadu government was dismissed without government recommendation. Such a dangerous provision for small advocate acts, you are putting same otherwise here. How it is going to be used or misused, nobody can say. Then, come for the meaning for tout. Who procures, in consideration of any remuneration, moving from any legal practitioner. What does it mean? Money will go from the pocket of the advocate to the tout. See, this house many times discussed at length about the corruption. The Prevention of Corruption Act says, periodically it has been amended, that not only the receiver, the giver of the corrupt money also culprit under this act. He has to be convicted. The tout is going to be eliminated and given imprisonment or penalty. Does it not mean to say the person who is giving money also liable for the offense? What type of justice you are rendering to the A and B between the money is exchanged? So the very purpose of the corruption, Prevention of Corruption Act itself is defeated here by way of the way in which the bill is drafted. Sir, next one. The first time I have come across a bill that has been submitted to the parliament, may be correct or may not be correct, I may be correct or may not be correct, that objects and reasons were not at all given in the bill. For what purpose we are going to give this amendment? Whether the Bar Council of States, whether the Bar Council of India is going to be consulted when a person is going to be listed as tout or not. What will be the role of the Bar Council? Sir, Chief Justice of India, a decade ago, Justice Bharucha said in the open meeting on the eve of his retirement that the 20% of the judiciary become corrupt. He made an open statement. The only problem for the litigant is a man is having case in a particular court, whether that judge comes under 20% or 80%, how does he demark it? So you want to revamp the entire judicial system, the cleanliness, right from doubts to up to judges. But you small matter, you are not able to draft a clear law to serve the purpose. So what type of purpose is going to be served? Nothing. Sir, ignorance of law is not an excuse. That is the legal maxim. A person cannot claim, I did not know the law. But what about the society? The society, still 30% of people are illiterate, so far as law is concerned. Again, so far as law is concerned, more than 70% of living persons are unaware about the legal system. So in such a situation, yes, you want to regularize the system of doubts, frame some guidelines, reasonable guidelines, but permit or either not permit. A healthy discussion must be there in all forums, including the Bar Council of India. Sir, suppose a junior advocate, not the junior advocate on record. You are designing advocate on record. After the examination done by the Bar Council of India or Supreme Court judges, a man has been designated AOR, advocates on record. A senior advocate designated by High Court and Supreme Court cannot be advocate on record. No, I'm not. See, AOR is separate. Senior advocate is separate. Who is approaching senior advocate? Litigant? No, AOR. The role of the AOR, advocate on record, becomes almost similarity with the doubt as far as the senior advocate is concerned. So, a judicial system needs some
middleman to bypass every pole in the judicial system. Whether that must be eliminated or that will be regularized with the rational application. That is the question before this House. I think that this bill is having no meaning at all because you are completely just mechanically transport a section which is available in 1879 Act to the new Act without application of mind. My only question is, what type of exercise that has been done by the government? Or what type of inference that has been drawn after this 100 years old law? Whether this provision is essential, if the potentials, the provision is workable or not, practicality of the provisions has been appraised or not. Nothing has been done by this government, but everything you want to say, you want to remove the corruption in the name of Narendra Modi, starting from small bill up to big bill. So my only thing is, don't make this parliament a laughing stock. Don't do the meaningless exercise for which the competency of this parliament is undermined. So revisit the law, take back this law, draft carefully, try to revisit, try to regularize, or try to make a system which is workable in the judicial system. Thank you, sir. Shri Kalyan Banerjee. Thank you, sir. I will bring the attention of the, I want to bring the attention of the Honorable Law Minister through you. First question is, really, every category of touts in the field of the law have been brought within the ambit of this statute? Is it correct? Tout is there in everywhere, lower judiciary up to Supreme Court. But these types of bill, practically you are identifying few persons who are in the subordinate court or the district court. What is the real intention to identify the tout? I understand this bill is what Mr. Raja has said just now, the replacement of the old provisions of the legal practitioners. Nothing more than that. You are taking that colonial. I have no difficulties. But when you are making an attempt to bring this bill, you think broad. There are a number of touts. Sir, I tell you one thing. It is very easy to identify tout who are poor. Among the poor, how much touts are there in the judiciary who are extremely sophisticated? Can you identify? The process you have started, I understand, appreciate. But the reality is this: tout is everywhere. Tout is sophisticated. Tout is there. Tout is here going to 5-star hotels. Tout is there going to 7-star hotel. Tout is taking you in different places of the country. You can't identify that tout because they are sophisticated. They are coming from very big universities. They are having Mercedes. You can't identify that touts. You can't identify. That's exactly I am telling that you are not, this is not a broad, you are not bringing all types of touts. Today when the discussion is there, let the discussion. I know it will not be done now. Think in future about this. No doubt about it. Let me explain myself. What is this tout, Sylvia? You know, sir, what we know about this? We are laws. What are the laws? Statute law. Correct? There is a law, case law. This is the laws are known to everyone. Statute law and case law. Applicable in the court. All we proceed. There is another law, which is called face law. And face law is the important for having an order from the higher judiciary, highest judiciary. That's the practical thing. And for the face law,
litigants have to spend lakhs and lakhs rupees. You have to invest 20 lakhs, engage 20 lakhs rupees lawyer, you will get the order. Touts are everywhere. Who are the touts? That's the whole difficulty. Identification of tout is necessary. It is very easy to identify a poor man. He is a tout. A lawyer is a tout. Talking about is a tout. But identify, take this system, bring this system, introduce a system to identify real tout in the judiciary, in the judicial system itself. It's correct what has been said. It's correct. It's an everyday's experience. Our judiciary has become, this is today, India, it has become too much expensive. Too much expensive. Unless you engage a very big face in the Supreme Court, you can't have an order. Good money, good law, good justice. Good money, good law, good justice. This is the practical thing in the country. That's going on. What is going on? You identify, sir, I will request you. You have come, you think real tout is what? Real tout is, sir, no one even amongst the, there are one grade of lawyers are there amongst them who are trying to, who possess themselves that I am the bridge. I can bring the judgment. I can bring the order from the highest court. I can bring the order from that judge. I can bring the order from that judge. Come here. I will engage him. I will engage him. Don't worry. Sitting in 5-star, everything is settled and everything is getting. He is the main tout. What is the procedure? How you are identifying it? Since you have brought the bill, I have got the chance to speak. And I am speaking. This is I was thinking for decades together. What is going on? I am a man of practical field. I am looking into these things. And this types of touts I will not tell all the judges, but of course, there are very few judges are there in our country, having a very good relationship with them. In their dinner party, they will go. In their lunch party, they will go. Their marriage anniversary, they will go. They will go. We know everything. Everything is known. Someone speak for 2 minutes law, 5 minutes face. Face law is very important in our country today to have an order, to get the justice. And who is getting that? The rich people are getting, not the poor people. Do you understand? Can you think about this country today, this judiciary is? Why the lakhs and lakhs poor people are not getting justice? Pending before the Supreme Court? Decades after decades. But Supreme Court is very much concerned whether there would be a marriage of the same sex or not. Therefore, Constitution bench will sit and they will go on hearing days in, days out, days in, days out. Peculiar things, sir. Sophisticated pupils, rich people, their problems would be entertained by the Supreme Court. Peculiar thing. I tell you, sir, do you know this same-sex marriage, whether it will be done or not, within 3 days, bench has been constituted, matter has been heard, everything has been done. Do you know, for long 27 years, 7 judges bench of the Supreme Court is not hearing one matter which really pertains to the poor agriculture worker of the West Bengal. Can you imagine? For whom we exist? Do we exist for the purpose of, whether the judiciary exists for the purpose of resolving the problem of the most sophisticated or a very sophisticated things or the rich people? Sir, I tell you one incident. I am taking your time. I am sorry. Chief Justice Datu was sitting. I was sitting on that day. I will not take the name of a very senior lawyer, very famous lawyer. He went and he wanted to mention a matter of one industrialist. I must say, Chief Justice of India, Datu said, Mr. So-and-so,
I have a number of matters of poor workers and poor peoples of this country. I don't have time simply because you are appearing for the top industrialist, leaving aside everything. I have to take up your matter. I have heard it. But today's approach is different, peculiar. I am not taking any name. Big corporates, go, big lawyers, give big lawyers, go, mention, his matter will be taken up. What is happening in our country? Poor people are ignored. This is the place. That's the, sir, I must say, this is going on. Sir, point is identified tout and non-identified tout. You are here, mayor making, you are trying to identify the tout. But the big arena, big places are there, big field, where non-identified tout is there. Nobody will tell them. Because they are not taking tea in the street shop. They are taking tea in the five-star hotel. Though they will not be identified. Sir, identification, how can you remove? Highly paid lawyer comes out. They accept it. Don't worry. 50 lakhs. Don't worry. Get the order. Order is coming, engaging someone. He is not there, engaging someone. And that's because of face law. Come. This is happening. Tout is there. Tout is also there today. This problem is. I am coming to a very relevant question now. Tout is there when relatives of any judge is in the field of practice, legal practice. Tout is there. Taking the name of the judge, relative is also holding out threats. It has come into the newspaper. I do not want to take. I do not want to take name. It is coming in the newspaper. It is under investigation. Let it be investigated. So since I have got the chance, I just tell you, sorry, I just want to tell you one thing. I don't have, the Honorable Law Minister, I don't have any difficulties regarding any transfer. I don't have. I want it. I wish it. I want that there should be a policy. Unless a policy is there, transparency would not be there. Whatever is the policy, you transfer anybody, how, I am not concerned. Give a policy. At least 140 crores people of this country will understand this is a policy. On that basis, transfer would be made. But today, what is happening? Picking up, transfer. Picking up, transfer. If relative is practicing, for that reason, transfer all the judges who relatives are practicing in any high court. Why you are bringing a judge into the Supreme Court, High Court to Supreme Court, knowing fully well that his relatives is practicing in the Supreme Court itself? Why? Why picking up the names? If I am unfit, if I am dishonest, if I am not fit for anything in any court, I am not fit, I am not for any other high courts also. Point is very simple. Then again tout comes. No. Tout will say, this is the problem that has to be addressed. Of course, I support, sir, your bill. But I am on a very larger issue to save the Indian judiciary. If for future generation, not, I am almost at the fag end of my career, legal service. How much? Yes, 8 or 10 years, how much? But save it for generation after generation.
the pain which I have faced, the things I have seen. Problem is this, I have told somewhere, the judges, why they are saved? Supreme Court judges, High Court judges. I can criticize, only here I can criticize because of the privilege of the Constitution, because of the existence of the Contempt of Courts Act. Because they can't criticize, no one can criticize any judge's activities, judge's thing. Otherwise he will be hauled up for contempt. Our judges of the country are saved only because of the contempt of court. Don't think everyone is perfect, everyone is correct. There are so many persons. I take it, I used to take it earlier, it may be some aversions. Sorry, today I don't take it. It's an aversions. It has become a great disease of the Indian judiciary. That disease has to be resolved. I know, you are having a limited power, limitation, I know. But this is the field, this is the place where I can tell my words. Let the highest court of this country take note of the contents which I have said. Thank you, sir. श्री एन रडप्पा जी, आप नाम भेजिए प्लीज, अपना नाम भेजिए. श्री एन रडप्पा जी, please send your name, then I will give you a chance and then you will speak. No. Thank you, Speaker sir, for giving me the opportunity to participate in this discussion. To introduce the Advocates Amendment Bill 2023. Please. There is nothing to oppose in the bill. I fully support it. This is a welcome step. Advocates for the important part of judicial system. They are not only the officers of the court, but also from the important bridge between those who see justice and those who are empowered under the law to give justice. These amendments of Advocates Act were long pending and bring about a critical reform in the justice delivery system of our country. The importance of these amendments cannot be understood, and while these amendments are important, questions can only be raised as to accept on the consultation behind empowering the state agencies to act against liars, and secondly, the enforcement of a mechanism that will be required implement of this law. This is because while we want to that so-called Munna by liars punished procedure also needs be brought about the ensure that there is no unnecessary prescription of any genuine liar, and through these amendments the independent judiciary is not hindered with, sir. One of the most crucial important of the justice delivery system in India is its human resource element, which is the advocate. The role cannot be overstated in the whole process. They act as bridge between the aggrieved and the adjudication institution. They also play an important role in shaping our society and not forget their role against courts to arrive at several judgments protecting the environment, sir. In 2017, two years ago, verification of drive by Bar Council of India found that only 50 to 60% practicing lawyers in India were genuine. This number was heavily reported in media. There needs to be a single public register for advocates across the country, which can be accessible by the public to across verify the claims of education qualification for each advocate they wish to engage with, sir.
Advocacy may look like a very glamorous profession, but for those who are in public practice of law, it is for them that it is for the truth, sir. The Advocates Act needs to be further amended to ensure that certain benefits of social security are also extended to the junior advocates, and to ensure that advocates of the profession can retain the best talent in that there is no profession regarding this. I would like to suggest the Honorable Law Minister to take steps ensure that first generation of advocates are also be benefit from the targeted government schemes for health and housing and other methods of to them to be able to earn respectively for their livelihood, sir. Despite of the important authoritative profession, these are not concentrate measures to place to ensure their social security, sir. Even new lawyer in New Delhi has to pay around 15,000 rupees for enrollment fee at Delhi Bar Council, charging fees beyond that what is prescribed under Section 24, subclass 1, subclass 5 of the Section Advocates Act 1961, violate the right to equality under Article 14 and denies opportunities the uprising advocates. I am requesting the Honorable Law Minister regarding enrollment fee of advocates. They are not in a position to pay advocates fee also, sir. In this regard, central government has to take some steps to provide minimum financial assistance to the rural advocates, particularly to construct their houses, to have bank loans, and to pay enrollment fees and etc. Sir. Regarding in Andhra Pradesh government, our Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is giving 5,000 rupees each junior advocates, all the advocates in Andhra Pradesh in every month, sir. There we have to appreciate the Andhra Pradesh government also, sir. Apart from this, I am requesting the Honorable Union Minister to strengthen this Amendment Act and also to implement the ideas of Dr. B.R. Ambedkar, which are in the Constitution. Union government has to take steps to introduce All India Judicial Service to implement, particularly to appoint judges in all the courts, including Supreme Court, to at least when All India judicial system is there, they are going to impartial like IAS, IPS people. They are going to render some service to the rural level people. Otherwise, people from expected clients, they are not able to get justice from these courts. Therefore, I am requesting the Honorable Union Minister kindly introduce All India Judicial Service in the country. Apart from this, regarding touts also, touts anywhere, any court, on all the department touts are there. It is not possible to curb them. It is not possible to us to take any action against them through law also. In this regard, the Union government has to take steps how to curb the touts system in all the systems, in all the governments in India level. Therefore, thank you very much for giving me the opportunity, sir. श्री भरतजी मेहता जी. Thank you, Chairman, sir. At the outset, I should make it very clear. The bill is relating to advocates. Bill is not relating to courts or high courts or Supreme Court function. Our attempt while deliberating on this amendment bill is to strengthen the advocates of our country and the system of jurisprudence in our country. This advocate amendment bill clearly mentions two things. One is to repeal all obsolete laws of pre-independence acts, not totally, but which have lost their utility. This should be borne in mind. All the law is not being abolished. Those laws which have lost its utility
are being removed. And Government of India is doing this in consultation with Bar Council of India. So these two things have to be borne in mind when we are deliberating on this subject. We know the history of Indian High Courts, how it was formed by a enactment of British Parliament in 1861, and subsequently what development has taken place in between. While going through the bill, sir, the definition of tout is also given. A tout means a person who procures in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner. The employment of the legal practitioner in any legal business. This is the first part of the definition who the tout is. But subsequently, in the second subpara, it is mentioned, the purpose of such procurement frequents the presence of civil or criminal courts or of revenue offices or railway stations, landing stages, lodging places, or other places of public resort. So in that respect, it has been very clearly mentioned in the bill that those touts who operate for lower courts, they need to be apprehended, they need to be named, they need their names to be published, and they can be prosecuted. The impression of the government is, or the earlier law was, that touts do not exist in high courts. They don't exist in Supreme Courts. We should not presume that touts do exist. But my only humble suggestion is that a beginning is being made. It was there in earlier enactment, which is now getting incorporated in this amendment, in the Advocates Amendment Law, through this bill. And the best part is, the previous law which was there, now one cohesive law is coming into existence. This was introduced in Rajya Sabha last August. It was passed in also Rajya Sabha last August. It amends the Advocates Act 1961. This bill repeals certain sections related to touts under the Legal Practitioner Act of 1879. The bill provides that every High Court, District Court, Session Judge, District Magistrate, and Revenue Officer not below the rank of District Collector can frame and publish list of touts. This bill makes the act of tout punishable. Means cases can be filed against them, they can be apprehended. But there are two aspects on which I would like to deliberate. One is the practitioner or the legal practitioners, the advocates, what need to be done for them. And the second is about 45, Rule 45 also is mentioned. That is relating to regulating legal education. That also needs to be looked into, which has not been addressed in this bill. There is Rule 36, which imposes 3 primary restrictions on lawyers. Firstly, lawyers are not allowed to promote themselves directly or indirectly. Second is, if a lawyer is involved in a case, they cannot advertise themselves in the media, newspapers, display their photo, or make inspirational comments. Question is, who is going to question the lawyers? Who is going to lodge a complaint against this type of dereliction of duty? Our expectation is the Bar Council of India will take cognizance of it and will deliberate on it, will take action on it. But are they doing that? During last 20, 30 years since the inception of Bar Council of India, how many such cases has been deliberated by the Bar Council? Not a single complaint has been lodged, or has it been lodged and it has been glossed over? In consultation with the Bar Council of India, government is repealing the Legal Practitioners Act of 1879. Now the legal profession will be regulated by a single act,
it is their responsibility to have quality lawyers. Section 36 of the 1879 Act is incorporated in the Advocates Act 1961. Some suggestions I have to make here for consideration of the government. Reform is a continuous process, and it has to be done with tune of time. There should be provisions for professional development of the lawyers in the Advocates Act 1961. There is no such provision even today, that how professionally an advocate can enrich himself. Technology has become all pervasive now. There are many emerging frontiers of law. Law to regulate telecom sector, law on intellectual property rights, Arbitration Act are some of those. Now, online dispute resolution has become a practice. Lawyers need to update with the latest development in the field of technology. Shouldn't we bring in these aspects in our amendment? How to legalize, how to make them more professional, that aspect we are missing. There should be, I would suggest, there should be, government may consider, there should be a national electronic register for advocates. Anyone, anywhere in the country can sit down and find out who are the advocates. Why should they take the help of touts? Or why should we presume that without a middleman, we cannot approach a lawyer? We do not have any such register. The Law Commission, in its 184th report, had suggested as such. There should be a single database. This would be good to bring social welfare schemes for the lawyers also, because you have a single database of the whole country. There should be a digital interface between the advocates and the clients. This will eliminate the need for Section 45A in itself. Why do we need middlemen when we can have an electronic platform that can connect advocates and clients? I have a query also. Do we need intermediary that is being incorporated as Section 55 in the Advocates Act after repealing Section 36? When we have digital interface, is this provision necessary? Finally, I would also for an Advocates Protection Act. Since states have enacted such law, Minister for Environment, Forest is also present here in this house. Rajasthan has enacted that law. The present law minister is also from Rajasthan. Rajasthan has enacted a state law. I'm not aware how that law is functioning and how much protection this advocate protection law has given. But it, but I think it is necessary, because at times we also come across number of news where lawyers are attacked or lawyers are threatened or intimidated. Advocates need to practice fearlessly. The advocates, after all, are officers of the court. They are important stakeholders in the administration of justice. I believe the suggestions given shall get utmost attention of the government. The other part which I would like to mention is relating to the academic, regulating the legal education that needs to be strengthened. Large number of law colleges are being opened. But what is the quality of the lawyers? We all know. When the quality of the lawyers that are coming out from the law colleges, it is not only affecting the bar, it is also affecting the bench. So keeping that in mind, I think it is of greater need to look into these aspects also and to bring a comprehensive law in favor of the advocate and our advocacy system. Thank you, sir. श्रीमती सुप्रिया सुले जी।
On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here to speak on today's bill of the Advocates Amendment Bill. Sir, Meghwalji has been a colleague to all of us and a pleasurable colleague for a long time. And he was the colleague who brought in the Women's Reservation Bill. And he's really lucky that he has brought in a bill, though it's not implemented. But he's lucky that in his legacy that he will leave behind, he'll be one of the finest ministers who has brought something which is very close to our hearts. And I'm not taking away his intent of this bill which he has brought in. I have only a few suggestions. I'm not a lawyer. Most lawyers have spoken before me. But the intent of the government, I'm sure, is very clear about what they want to do. But I have a few suggestions and questions to ask them regarding the implementation of this bill, which is actually really small. But there are a few questions I'd like to ask the Honorable out of my lack of legal knowledge. Is this that he says, what is a tout? Now, Mehtabji has spoken about it, and so has Sri Raja from the DMK. But I seek a clarification from the Honorable Minister that he says that, which already Mehtabji has read, that who procures in consideration of any remuneration. So it's a one-sided thing, any remuneration. So it's a one-sided thing. See, in the Corruption Act, both parties are considered to be making a mistake. Here, you are only considering one party to it. So should we not make it broader? And whoever engages or whoever hires, both ways, I think the practice is wrong, right? So why should only half the person be punished? So if you are really trying to remove touting completely, why not include both the parties, is my question. So if he could kindly clarify on that. The other question for me is that who are the members present at every meeting? There is no clarity of it. In 45A, they've written that the explanation is the majority of members present at the meeting. Now, who will be the members? Who will decide what will happen at the meeting? Who will decide just with such a small thing? Who is a tout? And who will be taking the decision? There is no clarity about this. Now, this is like Rajaji said, I'm reiterating the point, but there are no objects in the bill. It's probably little, I mean, it's a lawyer's bill which has such poor drafting, unfortunately, because there is a bill has to have its objectives. So there is no objectives in this bill. So what is the real reason of getting this bill? I'm again not taking away from the intention of the government. I'm sure the intention is, but when you are doing something for lawyers, isn't drafting and implementation most important than not just intent? Life is beyond intent. The other thing is about reforms, which Meghwalji said. Sir, I have never dealt with lawyers in my whole life, but in the last 6 months, I'm flooded with lawyers in my life, be it Election Commission or Supreme Court. And there is a saying in Marathi, sir, if with your permission, I would like to say it, that in Marathi they say, जो होशियार होता है ना, वो कभी कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ता है. जो होशियार है, तो कभी कोर्टाची पैडी चढ़त नाही. अभी मैं होशियार नहीं हूँ, अभी मानना पड़ेगा, मैं तो चढ़ चुकी अभी. There was no option. So I had no option but to climb it. And clearly, when you go to court, there are a lot of issues that are raised. The tout issue is discussed. But my whole point is there are a lot of reforms required in the court. I mean, justice delayed is justice denied. I don't want to go there. I know that's not the purview of the bill. But even one major point is injustice anywhere is a threat to justice everywhere, is what Martin Luther King has said. So I think this is a very broader role that we need. We really need to expand this bill. The course of this bill, which whenever we meet young lawyers anywhere we get, you go to states, like somebody from YSR Congress, Jagan Mohan Reddy ji's party said that they are giving 5,000 rupees a month to young lawyers. In Kerala, they give, I think, 2,000. So is there something to engage all these youngsters who are studying very hard to pass it? So is there some social program this government has in mind, like most states are doing? That is my first question to this government. To reiterate, which technology upgrade? I think with technology, so many things are happening now. So is the entire game for lawyers going to change in the next few years? So how do they skill themselves better? I mean, this whole thing about colonialization has been discussed. So it's a past, it's okay, good or bad. I think it's not been that bad on it. So let's not just criticize our history. The way forward is change, and change is inevitable in everybody's lives. And that's what policy is also. Policies also have to change with time. Look at the life today, something like artificial intelligence, something we didn't even expect
A mobile phone we didn't expect about 10 years ago in our lives, which has actually changed our lives. So every profession is changing. So are the lawyers. So is there something this government has in mind for technology upgrade of all the lawyers? The Protection Act, which Mehtabji talked about, I'd like to take it a little forward, that many governments all over the country, not just talking about advocates, but they are even talking about doctors and press safety and security, because somehow I do realize, and we must all put our minds together in this government and in parliament, that there is somehow so much anger in society nowadays. I don't know where this anger is coming from, sir. Even in Maharashtra, we are having a lot of challenge. I'm not trying to digress, but I'm just giving you a small example. Please don't misunderstand what I'm saying. There are a lot of agitations going on in Maharashtra today on reservations, sir, be it Maratha, Dangar, Lingayat, Muslim Arakshans. Lot of stone pelting is suddenly happening. So there is clearly some anger breeding somewhere. You hear doctors getting beaten up. You hear threats like Mehtabji said about lawyers. There are press people who are getting beaten up. So there is something missing somewhere, sir. I think this entire House Parliament with legislation, we even need to discuss all these social issues, because the intent of changing people's lives for the better is what, that's why we get elected and come here. So at policy level, the intent of the government to bring in to removing of the touts is a very welcome step. Sir, the only thing when I was hearing about touting was, आपको भी याद होगा हम लोग सब थे, तभी तो मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, तो वो टाउट्स खड़े रह के वो टिकट सिनेमा की बिकते थे, 10 रुपया का 100 रुपये में टिकट, iPad वगैरह नहीं था. That whole touting business is over, because first day, first show, life out of us is over. So technology does evolve life. So it will probably eventually do remove touts. But till then, can we do something better, which is simpler, positive, and like Meghwal ji said, Raja ji said, I would like to reiterate their points that why not bring a compressive bill, bring it, we could put it into the law ministry. The law minister is very fine. He's very supportive to all the demands of women that he did for us in the women's reservation bill. So I'd request him to take this back. Let's all take all the points suggested by all the renowned lawyers in this house, bring a more comprehensive bill, take all the feedback, maybe send it to a standing committee. There are good lawyers, even in the, I think the environmental minister is also a lawyer, if I stand corrected. Maybe some feedback from him also as a lawyer, and have a more comprehensive bill in the larger interest of the advocates of this country. Thank you, sir. Shri K. Sureshi. Sir, give me opportunity to participate in this bill. Sir, let me begin by quoting Mahatma Gandhi ji, who himself was a lawyer and an ardent champion of justice. An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more, so states Gandhiji. The quote means that any law must be aimed at delivering justice and vacating grievances of the oppressed, and if a law is unjust, arresting someone on the basis of the law is a form of violence. So the law has to be just to itself first. It is the context of the bill and my speech. The bill titled Advocate Amendment Bill 2023 is aiming at the insertion of new section, which is section 45A in the 5 of the Advocate Act 1961, which grants power to frame and publish list to touts to every high court, district judge, session judge, district magistrate, and every revenue officer not being below the rank of collector of a district. Each as regards their own his own code, and the code if any subordinate there. I have certain observation and recommendation in this regard, which are follows. As per the law, the authorities empowered to frame and publish a list of touts as provided under section 45A should be confined to only judicial authorities and not executive magistrates. If the district magistrates are given such power,
to frame rules. We cannot ensure transparency in finding out actual touts as defined under section 45(7)(b) of the amendment bill. Sir, similarly, the offense under the amendment bill as provided under section 45(6) may be cognizable offense and the penalty be enhanced to minimum 1 year and fine at least 10,000 or else no purpose would be served. Apart from these suggestions, I would like to ask the government through you, sir, that who is the tout and what are the benchmarks that you will use to identify a person as a tout. It is absolutely agreed that touts are a menace to the courts and justice system. What about people who would be implicated as touts when an excessive power is given to the courts? Any innocent person could be branded as tout, and that will be a dangerous situation. Sir, the question here is, we live in a highly polarized nation, divided by hatred and intolerance and discrimination. In this scenario, if excessive powers are given to the officers of the court to determine touts, anyone could be expelled from coming to the court premises. For example, a Dalit could be branded as a tout just because he is a Dalit, and an officer belonging to the upper caste and harbors discriminatory behavior towards Dalits or other communities. Another aspect is the amendment bill does not take into account any standard procedures for fixing the modes of appeal for a person branded as a tout other than appeal. This mechanism is problematic at many levels as the appeal system in many occasions is formed to be biased, and therefore I demand that appeal committee must be consistent representative of SC/ST community so that communal representation is ensured. I hope that Honorable Minister will agree my suggestion. Apart from this, I would also to be add that there are many issues concerning the legal system, including the reservation for scheduled caste, scheduled tribe in appointment of judges, the higher courts, which has been long-standing demand for many decades. I would like to appreciate Honorable Minister Sri Arjun Megwal ji, who is coming this ministry. So he also always for fighting the cause of untouchable people. In this law ministry, in your period, you have to take so many mechanism for the representation of SC/ST in the Indian judiciary. I also demanded that young advocates of SC/ST community must be given necessary stipends and financial support systems during their practice, and juniors, as they are finding it difficult to survive in the present condition. The demand for high court, the demand for another important demand I would like to bring your notice, our long pending demand for the high court benches. So in various states, there is a demand for high court benches. In Kerala also, long pending demand to set up a high court bench in Trivandrum. So I would like to request Honorable Ministers to consider our long pending demand. Sir, furthermore, I would like to conclude saying that the amendment aiming to identify and expose touts must not become a tool for opposition of any individual, and justice in the fairness must be implemented. With these words, once again, I congratulate Honorable Minister Sri Arjun Megwal ji as a law minister in this country to bring this important decision. Thank you very much. Thank you. Shri P.P. Chaudhary ji. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय सभी सदस्य इसको
सर्व समिति से पास करें। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मेघवाल साहब को कि इस बिल को आप लेके आए और इसमें दो एस्पेक्ट जो सभापति महोदय बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिशनर एक्ट जो है वो 1870 उसके सारे ऑलमोस्ट प्रोविजन जो हैं वो एडवोकेट एक्ट में ले लिए गए हैं और एडवोकेट एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं। सिर्फ एक प्रोविजन जो रहा है वो टाउट का रहा है। उस प्रोविजन को जो उसका सेक्शन 36 है वो सिर्फ टाउट के लिए हमें लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को देखना पड़ता है और वो प्री ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, कॉलोनियल टाइम का बना हुआ है और हम टाउट की डेफिनेशन को और टाउट के उसके प्रोविजन को देखने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 देखते हैं और जबकि सारा का सारा एडवोकेट एक्ट में दूसरी चीजें जो लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने की बातें हैं वो आ चुकी है। तो इसलिए वो पूरा का पूरा डेफिनेशन जो है और उसके प्रोविजन सेक्शन 45A एडवोकेट एक्ट में इनकॉर्पोरेट करके ये बहुत अच्छा किया। इसलिए माननीय मंत्री जी को, मेघवाल साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप, क्योंकि जब भी वो प्रोविजन जब इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा, उसी समय जो एक कॉलोनियल एरा का जो लॉ है, जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 है, वो लॉ खत्म हो जाएगा, वो रिपील हो जाएगा। इसका भी प्रोविजन इसके साथ में दिया है। और दूसरा एस्पेक्ट जो है इसका टाउट का है। आप देखिए लीगल प्रोफेशन में ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है। हम दूसरे जो बिजनेसेस हैं उसमें ये दलाल हो सकते हैं, लेकिन लीगल प्रोफेशन जहां है उसमें दलाल का कोई परिभाषा, कोई जगह नहीं है। इसलिए एडवोकेट एक्ट में भी ये प्रावधान क्या है, चाहे हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे रेस्पेक्टिव बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल हो, चाहे एसोसिएशन हो एडवोकेट्स की, लीगल प्रैक्टिशनर की एसोसिएशन हो, सब ये मानते हैं लीगल फ्रेटर्निटी के लोग कि इस तरह के जो टाउटिज्म जो है इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही एक अलग तरह का प्रोफेशन है। तो इससे सबसे ज्यादा जो तकलीफ में आते हैं वो आते हैं सबसे ज्यादा समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति हैं, जो इनोसेंट हैं, जो जानते नहीं, चाहे किसान ले लो, चाहे शेड्यूल कास्ट ले लो, शेड्यूल ट्राइब्स ले लो, और चाहे हमारे मातृशक्ति ले लो, जो गरीब हैं। उन लोगों को जब कोर्ट में उनको ये पता नहीं होता है तो वो ऐसे लोगों के टाउट के चक्कर में आते हैं और उनके पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। आप एक तरफ देखेंगे, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेस हो, चाहे बड़े लोग पढ़े लिखे लोग हों, या वो लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से लॉयर को करना, कौन से लॉयर को नहीं करना, तो उनको वो परेशानी नहीं आती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो अगर टाउट है तो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो गरीबों को आती है। तो ये बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार के द्वारा लिया गया और मैं धन्यवाद देता हूं पुणे मेघवाल जी को कि आपने इस तरह की डेफिनेशन जो एडवोकेट एक्ट 1961 में ला करके, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद में ये एक्ट पास हुआ और कॉलोनियल टाइप के कानून को खत्म करके पूरा का पूरा रिपील कर करके इसमें लाए, जिससे कि कम से कम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का जो है प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो विजन भी फुलफिल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा था लगातार, क्योंकि लीगल प्रोफेशन में सबसे बड़ी तकलीफ है, आप देखेंगे कि कहीं से भी गांव से सबसे ज्यादा विक्टिम जो होता है वो गांव का व्यक्ति होता है, इनोसेंट होता है, कमजोर होता है, गरीब होता है। वो जब अगर शहर में आता है या कहीं शहर से अपने किसी वकील को करता है तो उसको मिसगाइड किया जाता है। तो इस मिसगाइड को रोकने के लिए बेसिकली इसका अगर मेन स्पिरिट और ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसे लोग उसको मिसगाइड नहीं करें, जिससे कि एक ऐसे वकील के पास ले जाएं जो कि वो लीगल प्रैक्टिशनर इतना साउंड नहीं हो, लेकिन उसके पैसे जो व्यक्ति ले जाएगा और वकील के दोनों के पैसे उनके बढ़ते हैं और उसके जो भार जो पड़ता है उस गरीब पे पड़ता है। तो ये कानून जो लेकर आया है उन गरीबों को राहत देने के लिए लेकर आए हैं। और इस तरह से वो जब अब इसमें हम देखें 3 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं। एक आप देखेंगे लिटिगेंट, जो लिटिगेंट इसमें सबसे ज्यादा वो होता है जो इनोसेंट है और पुअर है,
और दूसरा होता है वो पर्सन एनी पर्सन एडवोकेट भी हो सकता है और अदर देन एडवोकेट भी हो सकता है। वो जो है दूसरे जिसको एडवोकेट एंगेज करते हैं उसके एवज में उसके लिए वो अपनी दलाली लेता है और वो दलाली का भार जो है उस पे गरीब पे पड़ता है। लेकिन भार भी नहीं पड़ता है, उसके साथ साथ दूसरा जो है उसको क्वालिटी लॉयर भी नहीं मिलता है, उसकी वजह से उसको नुकसान भी होता है। जब उसको सर्विसेज प्रॉपर जो मिलनी चाहिए लीगल प्रोफेशन में वो सर्विसेज नहीं मिलने की वजह से उसको नुकसान होता है और इस वजह से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब जहां तक आइडेंटिफाई की बात है, अब आप देखेंगे कि जो एक इनोसेंट है, एक पुअर पर्सन है, वो अपना वो एडवोकेट करता है उस दलाल के माध्यम से, उसको ये पता नहीं होता है कि ये दलाल है या मेरी मदद कर रहा है और वो उसको जाकर करके उसके एवज में उसको पैसे देता है और रिटर्न देता है, उसको कंसिडरेशन देता है उस दलाल को। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसमें कंप्लेनेंट जो है बेसिकली जिसने कंसिडरेशन दिया और जिसने लिया वो तो एग्रीड हो नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एग्रीड जो होता है वो इनोसेंट होता है और उसको ये नॉलेज नहीं है कि इसके खिलाफ कंप्लेंट भी हो सकती है, उसको ये पता नहीं है कि ऐसे लोगों को जो उनकी लिस्ट भी पब्लिश होगी या उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह से इस तरह के लोग जो हैं, जैसे मेरे पूर्व ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये भी बताया कि यहाँ पर हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। अगर ऐसे ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकते हैं, घूमते सारी जगह घूमते हैं, तो कोई भी पर्सिंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट्स हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट्स हो और चाहे ट्रिब्यूनल हो, इसमें हालांकि ट्रिब्यूनल की कहीं यूज नहीं किया है उसमें वर्ड, लेकिन मेरा मानना है कि किसी तरह के कोर्ट हो और उसके साथ कोर्ट भी नहीं, उसके अलावा ये लोग रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, ये लोग बस स्टैंड पे भी होंगे, ये पब्लिक जहाँ प्लेसेज हैं वहां पर भी उन लोगों को देखते हैं। तो ये लोग जो हैं अवेलेबल, जो कोर्ट का एक हमारी जो एक फेयर इमेज है न्यायालय की, उसमें जो है इसका इन लोगों का आइडेंटिफाई करने के लिए ये कानून लेके आए, इसलिए इस बात के लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट में सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए एविडेंस गैदर करना ये बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जो इस एक्ट के तहत में रूल बने उस रूल में एम्पल प्रोविजन ऐसे हों जिसमें इन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि एविडेंस जो है जब तक वो इनोसेंट व्यक्ति वो एग्रीड, सिर्फ और सिर्फ इसमें एग्रीड वही होगा क्योंकि ना तो दलाल एग्रीड होगा और ना ही वो एडवोकेट जिसको ये उससे कंसिडरेशन लिया जाएगा वो एग्रीड है। तो उसमें उसको बचाने के लिए उस इनोसेंट की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इसको एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए उसमें रूल किस तरह के फ्रेम करें। तो इस तरह से रूल का इंटेंट एंड ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि उस इनोसेंट व्यक्ति को हम किस तरह से हेल्प कर सकें, जिस तरह से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों की लिस्ट जो है वह पब्लिश हो। अब लिस्ट पब्लिश होने के बाद में कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट दो है। एक इफेक्ट तो है उसको उस परिशिष्ट से, उस न्यायालय से वो उपस्थित नहीं रह सकता, उसके अंदर वो नहीं रहेगा तो बाहर ऑपरेट करेगा कहीं न कहीं। तो ये उसके साथ में दूसरा जो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है उसको पनिशमेंट का है, उसके 500 रुपीज पेनल्टीज का है और इम्प्रिजनमेंट जो है वो बहुत कम इम्प्रिजनमेंट है, उसमें जो है हम इस क्राइम को रोक नहीं सकते। और आज की तारीख में 500 उससे हम लेकर के उससे बहुत कम अमाउंट ये है। और दूसरा जो पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन और बोथ। तो अगर उसको कहीं किसी लेवल पे सिर्फ फाइन ही इम्पोज करें तो 500 रुपीज फाइन होंगे, लेकिन इनोसेंट व्यक्ति जो है उसके साथ चीटिंग होगी, उसका हो सकता है केस भी उसने खराब कर दे। तो इसीलिए ये सफिशिएंट प्रोविजन इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स में आ जाए जिससे कि गरीबों को फायदा पहुंचे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत ही ऐसा कदम है, विजनरी कदम, जो बेसिकली जो हम ये कह सकते हैं कि जो न्याय मिलना है गरीबों को, उस न्याय मिलने में जो ये बाधा है सबसे बड़ी, उस बाधा को हटा कर करके और इनोसेंट लोग, गरीब हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे कोई हो, इस तरह के लोग जो गांव के कई फार्मर हो, उन लोगों के साथ में धोखाधड़ी नहीं हो, ये कानून उस दशा में है। इसलिए मैं बहुत बहुत पुनः माननीय
मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप ये थैंक यू। कानून लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री मालिक नायर जी। बोलने का मौका दिया और ये एडवोकेट अमेंडमेंट 1961 में जो टाउट्स की बात हो रही है, पहले टाउट्स का सोचना पड़ेगा कि उनको क्या शब्द है। कानून के पालन कराने के लिए गैर कानूनी तरीके से अगर कोई धन कमाता है, उसे बिचौला कहें, दलाल कहें, क्या कहें, उसको रिमूव करने की बात और जो लोगों को ठगने से बचाने की बात जो अमेंडमेंट में आई है, इसका हम सपोर्ट करते हैं, स्वागत करते हैं और एक अच्छी पहल है। लेकिन इसमें वाकई में जो हमारे साथी बोल रहे थे, जो सफरर हैं वो इनोसेंट लोग हैं, इसमें अगर उनको ज्यादा सख्ती की तो वो बिल्कुल महरूम रह जाएंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मैं साथ के साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो गरीब लोग हैं, जो बहुत दबे कुचले लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कोर्ट में एक ऐसी व्यवस्था करें, कमरा ऐसा बने जहां जाके वो कुछ जानकारी लेना चाहें, कुछ सुविधा लेना चाहें, तो उनमें कुछ बार काउंसिल्स को पावर दें, वहां के लोग हों, और अलग से राजनीतिक रूप से एक ऐसा कोई अलग से भी लोग डिप्यूट करें जो उसमें मौजूद रहें और जो उनको काउंसलिंग कर सकें और उनको सही रास्ता दिखा सकें, जिससे वो उनसे बच करके उनका धन भी खर्च ना हो, उनके साथ ठगी भी ना हो और उनको न्याय मिलने की तरफ आगे बढ़ सकें। इससे संबंधित मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो बात कानून की हो रही है, वो पिछले दिनों महामारी हुई, कोरोना के समय में जो वकील थे वो दूसरा कोई प्रोफेशन कर नहीं सकते थे कि अगर कोई महामारी या ऐसा आ जाए तो उस समय सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वकीलों को भी दूसरा कोई काम करने का या कॉन्टिजेंसी फीस को अलाउ किया जाए। ऐसे समय में एक चीज और कहना चाह रहा हूं, हमारे लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, DOPT लॉ एंड जस्टिस कमेटी में भूपेंद्र यादव जी रहे हैं, बहुत काम किया, मीटिंग, हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है वहां पे। तो उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लीगल एजुकेशन है उसमें हमारा देश कहां खड़ा है, सरकार को ये इवेल्युएट करें। हमारे देश का अगर पूरे वर्ल्ड वाइज रैंकिंग का हम पूरा रैंकिंग निकालें तो 551 नंबर पे IIM अहमदाबाद आता है केवल मात्र। बाकी जो उतनी भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं वो 25,000 के बाद सब आती हैं। तो जो वर्ल्ड के पैमाने पे ये UCL है, वहां से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पास आउट हैं, वो रैंकिंग 4 पे है। रैंकिंग 5 LSC जहां से बाबा अंबेडकर साहब पास आउट हैं। ऐसे ही आईवी लीग है, जो 7 यूनिवर्सिटी टॉप मिल करके उन्होंने एक लीग बनाई कि हम एक लीग है, हम रैंकिंग 1 है। तो इसी तरह जो लीगल एजुकेशन है, जहां सरकार का और बार काउंसिल का मिल करके हस्तक्षेप है, तो सरकार इस तरफ भी ध्यान दे कि उस सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। जो हम देखते हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटी में बार काउंसिल सरकार के ऊपर डालती है, सरकार के ऑफिसर बार काउंसिल के ऊपर डालते हैं। तो इसमें भी कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन सरकार करे जिससे कि वहां इतनी पारदर्शिता हो जाए और हमारे देश का लीगल, वो मीडिएशन की बात हो चाहे वो आर्बिट्रेटर की बात हो, जितना देश हमारा आज तरक्की कर रहा है और वकीलों से संबंधित भी हमारा देश उतना ही तरक्की करे और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के आर्बिट्रेटर सिस्टम से और मीडिएशन सिस्टम से और हमारे देश की एडवोकेसी से पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो कि भारत, जहां विदेश में लोग पहले पढ़ के आके नाम चीन हो, काम के लिए आज है। बस सब खत्म कर रहा हूं, बस एकदम खत्म कर रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि जो ये डाउट्स की बात हो रही है, ये मान लो जांच में आ गए और घेरे में आ गए और पकड़ लिए, उनको ऐसी सजा मिले जिससे ऑटोमेटिक आगे बंदिश लगे। और एक चीज और मैं मंत्री जी का संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि जो लोग के पास कोई बस केस डिस्कस करने आ जाओ, उनको झूठी सच्ची बोला यूं कर दूंगा और झूठे सच्चे नोटिस, झूठे सच्चे केस। तो ऐसी भी एक व्यवस्था सरकार सोचे, मंत्री जी सोचे
कि उसमें जांच हो कि इस वकील ने 100 केस पिछले कैसे करे हैं, उनमें सब पे क्या झूठे केस डले हैं, तो उनकी एक लिस्ट बने और वो लिस्ट वेबसाइट पे पड़ी हुई हो, जिस लिस्ट को देख करके किस वकील के पास जाना है, किस वकील के पास नहीं जाना है, इस पे पूरा लोग ध्यान दे सकें। और साहब बस खत्म कर रहा हूं, जो गांव देहात के लोग हैं, जहां इंटरनेट और जहां पे नेटवर्किंग नहीं है, वहां इंटरनेट और नेटवर्किंग की के कनेक्शन, चाहे वो सरकारी विभाग हो टेलीफोन से संबंधित, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, इस पे भी पूरा ध्यान दिया जाए। और साहब मैं एक जहां से मैं जीत के आता हूं, वहां राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे बैठे हैं अभी, और वो भी बैठे थे, जो बागपत के सत्यपाल जी भी बैठे हैं यहीं पे ही। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा जब चुनाव होता है तो 27 MP, 141 MLA, सबके सब MLA के कैंडिडेट और MP के कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमें जिता दो और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में मांग करेंगे कि यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना की जाए। तो आज आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसमें मेरठ लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, नगीना लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, कैराना लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, बागपत लोकसभा, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा, बुलंदशहर लोकसभा, सबको फायदा मिल सके, तो सरकार इस तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द, ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खत्म करो। सब आखिरी लाइन है बस, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जो इलाहाबाद जाते हैं, कई सौ किलोमीटर, पूरी रात लगती है, पूरी दिन लगती है, सर सुविधाएं भी नहीं होती, ट्रेन में टिकटें नहीं मिलती, बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की जाए। धन्यवाद साहब। Honorable member Sri Hussain Mustafa. Thank you, Honorable Chairperson, for allowing me to participate in the discussion on the Advocates Amendment Bill 2023. Sir, the problem is identified in the Act. It has plagued education system, I mean, for last more than 100 years. The first attempt was made in 1879 to provide some kind of response to the problem. Sir, while I stand in support of the bill, but all the same, I have reservations about the efficacy of the mechanism devised in the bill. Sir, I'm skeptical about whether the results of the bill, whether it will achieve the intended purpose. Sir, our courts, subordinate courts, are burdened with 50 million pendency. 50 million cases are pending in our subordinate courts. And the authority identified here, who is to identify who is the tout? Who has to go for that kind of an exercise? Because it is not that somebody will call somebody a tout or somebody will identify somebody or publish a list. Then a procedure is to be followed. And who is burdened with that? Who is saddled with that responsibility to identify, prepare the list and identify the person? It is High Court, District Judge, Session Judge, District Magistrate, and Revenue Officer. Sir, they are already overburdened. How come that a District Judge or a Session Judge can embark on that exercise and whatever is the cause list for the day, and also now deal with the other problem that, as I said, that afflicts the system. There is a malaise for the system. Sir, that is why I am doubtful whether this system, the mechanism devised, will be able to achieve the target. It is true that there is a large number of troubles, particularly in trial courts. But the process, the exercise to prepare the list and allow the person who is affected by the list or is affected by the exercise that may be undertaken by a district judge, he has to be given a right to respond to the allegations if any. So how can a district judge or a session or a subordinate judge deal with the exercise or prepare the list? I think that is doubtful whether this bill will bear the results. The right thing would have been that we designate an authority in a district court, like we have in High Court, we have a registrar vigilance or a vigilance commissioner
who deals with cases of misconduct against lawyers. The same way in every district court, we have an authority to deal strictly with this problem and prepare the list and do whatever exercise was is required to be done to go follow that exercise. So this is one reservation about it. Because what I have heard from other honorable members, there is some kind of a misconception of the problem. The target group that is sought to be addressed, the problem that is sought to be addressed. It is not that every tout. It is only the touters who operate from the court premises. Because our gullible people, the people who visit the courts, they are mostly affected. The people who operate from the court premises. That is why in para 5, clause 5, it says that the judge shall, one of the punishments will be that a judge will exclude him from the court premises. The person who finds his name in the list, the sessions judge or any other judge who is presiding over that court, he can exclude his presence from the premises of the court. That is, they should. So this is not targeted against all the touts, in whatever color and whatever costume they wear. It is only restricted to the touts who operate from the court premises, and one of the punishments to be proposed to be given is to exclude him from the premises. But while preparing this list, and fulfilling all the procedural requirements, the procedural due process, because a person cannot be declared as a tout unless and until he is given a reasonable opportunity. I don't think that the system devised under the Act is going to get the results that we targeted. Second is the target. One of the target groups is not only the gullible litigant, the litigant who comes to the court, visits the court for redressal of some grievance. It is also the junior lawyer, because these touts mostly eat up the work that may be dealt with by the junior lawyers, the fresh entrants to the profession. So this is one of the welcome steps. This will be just received with that kind of enthusiasm by the junior lawyers who enter the new freshers in the law courts. But at the same time, I would urge Honorable Minister to propose some kind of a measure, some kind of an amendment in the Advocates Act that provides for some honorarium or some kind of support to the fresh entrants, to the new entrants to profession, because those are tough years for a junior lawyer. The initial 5 years are very tough years for junior lawyer. I had proposed a private member's bill for assistance, giving assistance to advocates. I think that would be a welcome step if that is done, so that they get some kind of a relief. But with that, with whatever I said about the mechanism and my reservations of the mechanism, it's a welcome step, and there should be some kind of a second look on it, so that instead of burdening the sessions judge or the presiding officer of the court with this exercise, who's already overburdened, it will be better to have a designated officer like a vigilance commissioner, as we have in courts, in high court, a vigilance commissioner or a registrar of vigilance, the officer who is asked to exclusively deal with the problem and go and complete the exercise, and then only he will be able to efficiently identify the objects of this act will be achieved. Thank you. Thank you. All members, A.T. Mohammed Bashir. Sir, thank you very much. Sir, this piece of legislation is like a fait accompli one. Sir, in 1961 Advocate Act was based on certain authentic reports and recommendations of the judicial commissions, and 1879 Act was there, when 1961 Act covered all the issues raised in the other parent act, and that is perfect. Unfortunately, this particular thing that is pertaining to touts was missed in it. This is to fill up that. That is the scope of the act. That's okay. Now, sir, what I would like to point out is, I heard the former speaker's speech. Mainly, they are all not only MPs, they are eminent lawyers also, legal luminaries. They were all sharing certain apprehension. Number one is,
how is the procedure in identifying and listing the touts? The procedure stipulated when this act is having confusion. So that is to be readdressed. So they were citing certain burning issues, such as deterioration in the judicial system of our country. Similarly, sir, there is a wide kind of criticism that impartiality and independence of Indian judiciary is diminishing like anything. That also is a point of concern. Sir, another point which you have raised also, sir, lack of representation for underprivileged sections, SC, ST and OBC. Sir, there is no judicious combination in the higher judiciary as far as these marginalized sections are concerned. Sir, we all know that trustworthiness of the judiciary should be adhered strictly. No doubt about that. All kind of unfair practices should be curbed. That also is truth. Transparency and ethical values should also be strictly adhered. We have to ensure there is no loopholes in the existing structure to lose the trustworthiness of judicial system in our country. So we all know the relation of the responsibility of the lawyers. Section 1 of the chapter 2 of the part 4 of Bar Council of India frames code of conduct and ethics of advocates and prescribed duties of advocates in the court. Sir, that is very clear. Code of conduct was laid up. That shows that lawyers should not take up any cases where client may have some wrong thinking, and there should be a clarity for that also. Similarly, sir, the unfair practices, wherever it is to be curbed and it should be discouraged. So, then not only that, Code of Conduct says that lawyers should not promote any kind of unauthorized practice to make like advertisement and solicitation of work like that. So that kind of canvassing also should not be there. That also can be treated as a bad practice. Similarly, lawyers' responsibility has also been categorized in that. What is that? They have a responsibility to court to do justice. In that way also, the relation with the judges, that also is a very important thing. In fact, sir, lawyers, it's not just a profession like that, sir. It's a noble profession. It's a very sacred profession. In that way, a lawyer is duty bound to educate his client not to have any kind of unfair practices, sir. As far as judicial credibility, transparency, and accountability is concerned, the whole nation is worried about that, sir. Any kind of lapses taking place there is a trouble one, a very worrisome kind of thing. We have to address that also, sir. Similarly, sir, the relation with judges and the lawyer, that also is a very important thing, sir. Like that, you know that bar, that is advocates, and bench, that is judges, play an important role in administration of justice. The judges administer the law with the assistance of the lawyers. The lawyers are the officer of the court. It's a very important thing, sir. Unfortunately, there is some kind of misunderstanding developing with certain judges and the lawyers. That also is an unhealthy practice. That also may kindly be addressed. Sir, towards the end, I would like to say one thing for what is called a loud thinking. Now, sir, what is happening? There is a complicated situation. Judges, it's a very, very, very powerful position, and very important also as far as the constitution is concerned. But I would like to make just a submission, not a conclusion, for the loud thinking of this house. Reappointment of the judges. So judges, unfortunately, they may have a hope that after retirement, government may give him some new appointments. Is it a healthy practice? If this kind of practices continues, will it not affect the transparency and accountability of the judiciary? That's a point to be debated. We all know the story of that. I don't want to go to
the depth of it. They should not have an impression that after retirement, if we do something for the government support for things, that kind of a tendency is bad tendency. That kind of tendency should not be encouraged, and we have to loudly think whether we have to give such kind of appointment for the judges after retirement. This is the few words I want to submit all this. With these few words, sir, I conclude. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Shri Janardhan Singh. सभापति महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अनुमति प्रदान किया है। सभापति महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के माननीय विधि मंत्री माननीय श्री अर्जुन लाल मेघवाल जी के प्रति भी आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप एक से एक ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे देश का सीधे सीधे वास्ता है और उससे देश का कल्याण हो रहा है। इसके पहले आपने नारी शक्ति बंधन कानून लाया, जिस देश के नारियों में एक उत्साह का वातावरण जागृत हुआ है और वह अपने कानून के माध्यम से हर दिशा तलाशने का काम कर रही है और देख रही है। और आपने ऐसा ही यह कानून लाया, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, जिसका मैं हृदय के गहराइयों से समर्थन करता हूं। इसका मैं आपके आगे मैं बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में 1 अगस्त 23 को यह प्रस्तुत किया गया था। विधेयक का आशय सभी प्रचलित कानूनों या अपनी उपयोगिता को खो चुके स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करना और विधि व्यवसायी अधिनियम 1879 को निरस्त करना है। सभापति महोदय, यह कानून कोई आज नहीं, यह भारत में प्राचीन भारत में भी विधि व्यवस्था थी। और जब उस समय जब यह कानून था तो छोटे छोटे समूहों में रहने वाले लोग अपने समूहों के जातियों के मुखिया सभी सदस्यों के समक्ष खुले आसमान के सामने वह अपना निर्णय सुनाते थे और उस समय उनको अलग अलग तरीके से कठोर निर्णय देकर के उसको दंडित करने का काम करते थे। और यह उसके बाद जब राज्य सत्ता की स्थापना हुई तो राज्य लोग अपने धर्म गुरुओं और बुद्धिमान दरबारियों की मदद से न्याय देने का काम करते थे। और यह लगातार चलते चलते जब स्वतंत्रता पूर्व विधि व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौरान भारत में एक मॉडल विधि प्रणाली विकसित की गई और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने क्राउन को लेटर्स पेटेंट द्वारा भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया। और इन लेटर्स पेटेंट्स ने उच्च न्यायालय को अधिवक्ताओं और न्यायविदों के नामांकन हेतु नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया और सशक्त बनाने का काम किया। सभापति महोदय, फिर उसके आगे अगर हम आते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जस्टिस से एसआर दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार समिति का गठन किया गया और समिति ने अपनी रिपोर्ट में अखिल भारतीय बार काउंसिल और राज्य बार काउंसिल की स्थापना करने की सिफारिश की। समिति ने बार काउंसिल में अधिवक्ताओं के नामांकन, निलंबन या उसके सदस्यता रद्द किए जाने की शक्तियों की सिफारिश की। समिति ने यह सिफारिश भी की कि गैर स्नातक प्लीडर्स और मुख्तारों की आगे कोई भर्ती न की जाए। केंद्र सरकार ने वर्ष 1961 में अधिवक्ता अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम से पूरे भारत में विधि व्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय स्तर पर विधि व्यवस्था की उपयोगिता और गरिमा कायम की। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिनियम विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि में संशोधन करने के अतिरिक्त उसे समेकित भी करता है। सभापति महोदय, हमें यहाँ दलालों के बारे में बात करते हैं। अगर और इसे विधि व्यवसायी अधिनियम 1879 की धारा 36 दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्ति से संबंधित है।
सभापति महोदय, प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो जिले के कलेक्टर के श्रेणी से नीचे का नहीं हो, प्रत्येक प्रेसिडेंसी को यह अधिकार दिया गया और इसका हमें लगता है कि उन दलालों के ऊपर कार्रवाई कर दें, उनको दंडित कर दें आर्थिक, या फिर उनको जेल देने का उसको नियम बनाया गया है। सभापति महोदय, मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि अभी सदन में ही हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, इस सदन का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सदुपयोग किया जा रहा है देश के 144 करोड़ के लोगों के हितों में, कि हर एक ऐसे कानून और कठोर और सही कानून बना करके उनको इसका लाभ मिल सके। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई यह सदन के माध्यम से और कानून के माध्यम से किया जा रहा है। न्यायपालिका एक के लिए नहीं है, न्यायपालिका सबके लिए है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि न्यायपालिका सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, न्यायपालिका सबके लिए है सभापति महोदय। और कानून की जानकारी होना सबके लिए आवश्यक है, और कानून की जानकारी होगी तो हमें लगता है कि कम से कम गलतियां करेंगे और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। कानून बनाने से ही यह कानून जो दलालों के खिलाफ कानून आया है, मैं मंत्री जी को फिर बधाई दूंगा कि यह बनते ही ऐसे दलालों पर बड़ा अंकुश लगेगा। और इस दलालों का तो बोलबाला, मैं आपको सभापति महोदय, मैं अंत में बताना चाहता हूं कि अगर चले जाइए, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में आज बालू और दारू का बोलबाला है। इन दलालों का जिस तरीका से बोलबाला वहां चल रहा है, हमारे जिस तरीका से यह सारे व्यवस्था को, वह दारू बंद है लेकिन दारू चल भी रहा है। हजारों लोग वैसे जहरीली दारू से मर गए, लेकिन दारू आज भी बंद नहीं हो रहा। बालू का ओवरलोडिंग हो, बालू का चाहे चलान हो, उस दलालों के माध्यम से खुलेआम चल रहा है, लेकिन आज उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। मैं सभापति महोदय, यह लगता है कि यह कानून बनने से उस बिहार में भी दारू और बालू पर अंकुश लग सकता। Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to participate in the discussion on Advocates Amendment Bill 2023. On behalf of ISRCP, I fully support the bill. I thank Honorable CM Sri Y. Jagan Mohan Reddy sir and floor leader Honorable MP Mithun Reddy sir for giving me this opportunity. Sir, self-respect and democracy are the basic essentials for happiness of any human being. Money is secondary. Advocates play an essential role in this regard. An advocate with good heart can restore the self-respect of aggrieved citizens. They can bridge the gap between common man and justice. They can play an important role in building a society with equality. If they can support the marginalized and underprivileged communities, they will be treated as living gods. The three basic responsibilities of any government are justice, health, and education. I hope this amendment will bring some relief to the common man of this country with regards to justice. We cannot deny the fact that justice is still a mirage to large sections of this society. Under the leadership of Honorable Prime Minister, people are expecting more such reforms in the Indian judiciary system. Sir, every kind-hearted citizen wants a change in the society. For a change in the society, amendments of existing acts should be a continuous process. So, this amendment is very much needed. It's a need of the hour. Sir, the Advocates Amendment Bill 2023 is proposed to amend the Advocates Act of 1961. The bill repeals certain sections of Legal Practitioners Act of 1879 and consolidates the 1961 Act. The bill provides that every High Court judge, District Judge, Sessions Judge, and District Collector may issue a show cause notice to a suspected tout, institute an inquiry, and publish a list of the touts. The courts can then prevent the listed touts from entering the court premises. The listed touts may be punished with imprisonment and are fined. So this is a welcome measure, sir. Sir, since touts in legal system is detrimental to a good society, this anti-touting law, if enforced strictly, can curb unethical legal practice in India. At this juncture, government should take care to avoid overlap of work of Justice Deepak Gupta committee and this amendment. Sir, since this is a very small bill, I would like to take this opportunity to highlight few more issues of the judiciary system plaguing the Indian society. So, amendment of various acts related to legal system are needed
for natural justice to prevail, sir. For example, advocates registry. The Bar Council website has a registry of advocates, but it is not easy for the common man to access it. Advocates registry access through a smartphone app can be of immense help to the common man so that he can select an advocate with good credentials. So problems of junior advocates are plenty which need to be addressed, sir. In the judiciary parlance, there is a word called syndrome of underpaid and overworked junior advocates. First 5 years of any first generation advocate's life is pitiable. They are underpaid, sometimes as low as rupees 5,000 rupees. There is no time schedule, no work rules. So their life should be respected, livelihood should be respected. This problem can be solved to some extent by changing the curriculum of LLB course. Practical knowledge should be imparted along with the theory. Internship courses need to be started by the government. Sir, social security measures like health insurance, provident fund, ES and housing should be given to the junior advocates. This will safeguard the existing practitioners and also attract the best talent in the profession. Judges and administrative staff of the judiciary system are better placed when compared to junior advocates. This anomaly needs to be corrected. So young members of the bar are future of the bar. The standard of the bar will remain good only if these young advocates are taken care of. With the evolution of society, good lawyers will be the need of the hour for both the bar and the bench. So welfare committee of the bar should be constituted as in many Western countries, which will take care of the financial, psychological health needs of the junior advocates. The financial assistance to be given to the juniors by the bar councils. And the inefficient legal system should be taken care of. Sir, as per the data provided by the National Judicial Grade, 21 lakh civil cases and 61 lakh criminal cases are pending in the courts of India. A junior advocate will lose the faith of the client when the case is prolonged for many years. This has nothing to do with the efficiency of the advocate, but it is the fault of the legal system. So we talk about ethics of doctors, politicians, students, and professors. But can anyone in India talk about ethics of judges? Can we make laws to fix a time frame for disposal of litigations? Sir, enrollment fee by bar councils lacks uniformity. For example, it is 750 rupees in one state bar council and it is 15,000 rupees in Delhi. This is against section 24(1)(f) of the Advocates Act 1961 and violates the right to equality under Article 14. I request the Honorable Minister of Law to take necessary steps in this regard. Sir, likewise, budgetary allocation should be increased and a lower ratio of judges to population ratio should be taken care of. Sir, to conclude, I would like to mention about YSR Law Nestam. Government of Andhra Pradesh under the able leadership of Honorable Chief Minister Sri Y. Jagannath Reddy is providing monthly stipend of 5,000 rupees to all junior doctors since December 2019. As usual, our beloved leader is a trendsetter of many novel welfare schemes in India. I request Honorable Minister to start a similar scheme on all India basis. So to conclude, sir, the Advocates Amendment Bill which seeks to reform the legal system in India needs effective implementation. With this, I support the bill. Thank you. Thank you. Honorable Member Sri N.K. Prem. Usual guy. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on a small bill, though it is a small, but it is very important bill as far as the advocates community is concerned. It is Advocates Amendment Bill 2023. Sir, most of the honorable members, especially Jagadimpiga ji, he was making an eloquent speech praising the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ke netritva mein. Wonderful things have been done by means of this legislation. I can't understand what is the spirit and what is the contents of this legislation. What Mr. Jagadimpiga ji has imagined or assessed about this legislation also, I'm not sure. Why? Because this is a legislation which is already in existence. Only thing the government is doing is to repeal an obsolete law. Other than nothing is new in this bill. Jagadimpiga ji, this everything is a colonial legislation. This itself is a colonial legislation. You are taking a portion of section 36 of the colonial legislation and incorporating it in the Advocates Act,
There is nothing is new. No revolutionary things was done by the Honorable Prime Minister in having this legislation. Unfortunately, unnecessarily you are praising everything, because what the thing in 1961 provision is, the act is there. 1879 act is also there. So you have to understand that you have to took that portion 1879 act and incorporated in the 1961 act, and nothing is there, only repealing an obsolete law of 1879. That is the thing which is happening. This is the way by which exaggeration is going on in the House regarding so many things which is being done by this government. Sir, my point, I fully support this bill, but I would like to seek some clarifications from the Honorable Law Minister. The number only is the statement of objects and reasons in the bill. It is not so specific. Why? Because you are mentioning that it is only to repeal the obsolete law. But as far as at the same time you are incorporating some provision, that is section 36 of the 1879 Act is being incorporated in the Advocates Act of 19, that is not there in 1961 Act. You are incorporating that new provision, so that also should come in the statement of objects and reasons. That is a simple observation on the part of the statement of objects and reasons. And another point which I would like to seek the clarification from the Honorable Law Minister is, Law Practitioners Act of 1879 was in existence. In order to replace the 1879 Legal Practitioners Act, in the year 1961, a new Act of Advocates Act of 1961 is being legislated, it is being made. But unfortunately, sections 1, section 3, and section 13, except all other sections were repealed. These sections were there in the original Act of 1879. My question is, why in the year 1961, the legislature, the then parliament, they have avoided this provision, section 36, from the 1961 Act? To my information, or to my understanding, or to my knowledge, because this is nothing to do with the Advocates Act. This is the law, section 36 of the 1879 Act is relating to the touts. Advocates Act is a law consolidating the rules and regulations regarding the advocate profession. The touts has nothing to do with the advocate profession. That may be, or that might be the reason by which section 36 is not incorporated in the Advocates Act of 1961. So I would like to seek the clarification or the justification from the Honorable Minister, how the law of torts will come within the purview of Advocates Act of 1961. Maybe that's the reason by which it was not incorporated during 1960 when this law was made. So that clarification I am seeking from the Honorable Law Minister. Sir, this is the thing which I would like to discuss on the contents of the bill. Otherwise, the bill is absolutely okay. We fully agree with the bill, because obsolete laws have to be repealed from the law books, statute book, and also this incorporating this also nothing harm. But only clarification I am seeking out of the bill is, that is how the law of torts will be relating to the law of advocates, because it is nothing to do with the advocate profession is there, but as far as the advocates is concerned, it is nothing to do with that. So this is the only clarification which I am seeking. And regarding the one or two other points which I would like to draw the attention of the Honorable Law Ministry is, nowadays most of the legislations which is coming for legislation for enactment, it is the advocates is being omitted, or this the role of advocates is being limited by means of the legislation. The government has to take care, because strict legal interpretation nowadays, it is very difficult. Even the Honorable Supreme Court Judge, Chief Justice, has already observed that it is very difficult to understand and interpret the verbatim or the legal drafting of the laws made by the parliament. This is the situation. Even the judiciary is not able to have a good interpretation or understanding of the law made by the parliament. At the same time, most of the times we are trying to limit the role of the advocates in the legal proceedings, and thereby so many authorities are, in almost all the authorities, I'm not going to cite the examples, all the authorities, the advocate's role is being limited. That has to be looked into. That is one of the issue which I would like to highlight. And another one is regarding, sir, most of the members, the previous speaker has also spoke about it, because Kerala Advocates Act, we know that the Advocates Act is meant for the regulating the profession, along with this Bar Council is also part and parcel of this act. So we have to keep the welfare of the advocates also. We know the legal profession,
We know the medical profession, almost all other professions, internship allowance and so many other things are there. As far as the junior advocates are concerned, in Kerala, we have a phrase that there are 4 stages in a profession of advocacy. Sir, 1 second. 4 stages. First stage is the raw junior. There is no case, there is no fees. The second stage is there is case, but there is no fees. The third stage is there is case as well as fees. And the fourth stage is the super senior stage. Thereby, there is no case, but fees is there. This is the 4 stages of an advocate. In local language, we are saying it. So what my point is that the junior advocates have to be protected by providing some internship or stipend allowance, not less than 25,000 rupees. For getting something has to be done, because in house urgency, internship, in so many other things, we are providing such type of, after PG degree examination, the medical examination, we are providing all these amenities. Similarly, the junior advocates have to be protected so that they will maintain the profession in the proper way. And the so many other posts, because executive posts in which law degree has to be made compulsory. Sir, my suggestion is, as far as the station house officer, a station house officer has to be well aware with the laws, especially the Criminal Procedure Code, Indian Penal Code, and the civil law. They have to be well versed with. But unfortunately, most of the house stations, we know very well that they are not fully aware of this. So, as far as the SHO, the minimum qualification of a station house officer should be having a legal degree, that is an LLB degree, that should be made compulsory for all such type of executive posts. And the last point which I would like to highlight is, as far as the medical profession, we have made the proposal for having a law is there. Most of the 22 state legislative assemblies have made laws for protecting the safety and security of the medical professionals. Sir, same thing is happening in the case of advocates also. That is from the police forces. In my state, in Kerala, in Trivandrum bar, in Kollam bar, and in High Court also, so many conflicts are being taken because police is brutally attacking the advocates, and the police is interfering into the profession of advocacy profession, and no protection is being provided. In such a way, we have to think of giving safety and security in the discharging of the profession as an advocate, especially from the police forces. Yes. Now, series of incidents of violence is being happening in various parts of the country. That has to be dealt with, for which also the government has to think of formulating some legislation so as to protect the interest, safety and security of the advocates in discharging the functions as a legal professional or an advocate. With these suggestions, I would like to support this bill once again with these clarifications. Thank you very much, sir. Thank you, Honorable Member Shri Adhir Ranjan Chaudhary. Sir, taking advantage of this discussion today, I am goaded to participate in this bill under the nomenclature, the Advocates Amendment Bill 2023. Sir, already number of a long list of members have participated and made their valuable suggestions on this particular legislation. So the issue is that legal profession, it has already undergone a long evolutionary process in our country. Sir, legal profession has been in existence since the ancient times. Then the head of the groups or tribe delivered justice under the open sky before all the members. There was no specialist like a lawyer during those days. When kingship was established, the king delivered justice with the help of his religious head and wise courtiers. During the British period, the model legal system was developed in India. The Indian High Court Act 1861 passed by the British Parliament enabled the Crown to establish high courts in India by letters patent, and these letters patent authorized and empowered the high courts to make rules for enrollment of advocates and attorneys. All India Bar Committee was constituted under the chairmanship of Justice S.R. Das. The committee in its report recommended the establishment of an All India Bar Council and State Bar Council. So the legal profession, we must acknowledge the fact that the legal profession is an important limb of the machinery for the administration of justice. Without having an well-organized profession of law, the courts would not be in a position to administer justice effectively. Sir, also, the judiciary still
is being treated as the last resort of the affected people across the nation. Sometimes I feel that common people are losing their reliance upon legislature, upon executive, and gradually they are going to resort to the judiciary in order to address or redress their grievances and their problems. So the legislation should ponder over this growing phenomena insofar as our legal mechanism is concerned. Sir, the issue is that the government is intending to bring this legislation with an intention which has been depicted by the government in this bill. To repeal the Legal Practitioners Act 1879 and to amend the Advocates Act 1961 by incorporating the provision of Section 30. We must say that still the legal and the legal professional mechanism should be more streamlined, should be more strengthened. Sometime in our own experiences, we are facing various kind of hassles and intricacies in order to execute our political activities also. जब सियासत के चलते, राजनीति के चलते कोर्ट की दर्शन होने पड़ते तो पता चलता कोर्ट के अंदर की लफड़ा क्या है, कोर्ट के अंदर की समस्या कितने हैं, और कोर्ट में हम जैसे लोगों को जो बाहर से कोई केस में इम्प्लीकेट होकर कोर्ट में जाते हैं तो वकीलों ने और कोर्टों की दलालों ने हमें मुर्गा समझते हुए जितना हो सके नोचने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। लोग कहते हैं कि अगर शेर ने आपको हमला किया तो 12 या 13 चोट लग सकते, लेकिन कोर्ट और वकील ने, पुलिस ने अगर हमला किया तो आपको 18 से ज्यादा चोट लग सकते। तो इसी के चलते मुझे ये सलाह देना चाहते हैं हमारे कानून मंत्री को कि अब गरीबों की बात सोचते हुए, आम जनता की बात सोचते हुए ये लीगल एड प्रोसेस को और मजबूत करो। लीगल एड फॉर पुअर एंड वल्नरेबल पीपल शुड बी स्ट्रेंथेन्ड इन अ मैनर so that the entire process could be helpful for them. That is why I thought it prudent to at least put forward some of the views of the common people that touting वकील, ये सारे जो मुद्दा है हमारी ये कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, इसमें और सुधार लाना जरूरी है। वकीलों की, टाउटों की, और बीच में जुडिशियरी के बारे में कोई टिप्पणी यहाँ किए गए थे। मुझे लगता है इस तरीके की टिप्पणी करते समय हमें और सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये हमारे संविधान में एक चेक्स एंड बैलेंस के हिसाब से हम देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते हैं जुडिशियरी, तो जुडिशियरी पूरा भरोसा रखते हुए हम सबको इस तरीके के कानून बनाना चाहिए कि जुडिशियरी हम पे हस्तक्षेप ना कर पाए। इस तरीके की चूज दुरुस्त अगर कानून हम बनाने में सक्षम रहे तो ये चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म, चेकमेटिंग जो मैकेनिज्म है, ये और इसमें और ज्यादा असरदार होगी। तो सर, मैं ये जो विधेयक लाए गए हैं इसको समर्थन करते हुए मेघवाल साहब को ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए ये लीगल एड प्रोसेस को, लीगल एड मैकेनिज्म को और थोड़ा चूज दुरुस्त कीजिए। ये सलाह देते हुए मैं अपना वक्तव्य को विराम देते हैं और बिल को समर्थन करते हैं। थैंक यू। श्री इम्तियाज जलील। लेकिन बिल अधूरा है, और इस वजह से अधूरा है अध्यक्ष महोदय, ये जो टाउट का डेफिनेशन दिया गया है
इस बिल के अंदर टाउट का मतलब यह है कि पर्सन्स हु प्रोक्योर क्लाइंट्स फॉर अ लीगल प्रैक्टिशनर इन रिटर्न ऑफ मनी। टाउट्स का मतलब दलाल हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है या मिडलमैन हो सकता है। और ये बिल इन दलालों को, इन टाउट्स को पेनलाइज और पनिश करने के लिए लाया गया है। इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ इस बिल के जरिए हम जो दलाल है या जो टाउट है उसके ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं, या वो दलाल किसके लिए काम कर रहा है, क्या इसके बारे में सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या वो सिर्फ अपने क्लाइंट से पैसा खींचने वाला है, या जिसके लिए वो लेके जा रहा है उस एडवोकेट के लिए, तो क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए इस बिल के अंदर? इसके बारे में भी जवाब होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, यकीनन यहां पर आज जो डेफिनेशन दिया गया है कि ये टाउट्स कहां पे मिलते हैं, तो आपने बताया है दे फ्रीक्वेंट प्लेसेस सच एज द प्रेसिंग्स ऑफ द सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के अतराफ में ये बिचौलिए दलाल होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसेस के अंदर होते हैं या रेलवे स्टेशन के ऊपर होते हैं, और ये ग्राहकों की तलाश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत है। ये टाउट्स आज हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको मिलेंगे, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जहां कानून बनाए जाते हैं शायद उसके अतराफ में भी ये टाउट्स आपको मिलते होंगे। इसीलिए आज अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या टाउट्स नहीं है, अगर किसी को बेल लेना है और अगर पुलिस वाला ये कहेगा कि मैं बेल का अपोज नहीं करने वाला हूं, तो ये भी एक टाउट है। गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर अधिकारी भी टाउट का रोल अदा कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि जिसके अंदर बहुत खुश होंगे आज देश भर के जितने भी टाउट्स, अगर ये बिल पास हो गया है तो क्योंकि उसकी पनिशमेंट के पैसे कितने हैं, महज 500 रुपये। मैं मंत्री जी, इस सरकार ने 500 रुपये की कीमत 50 रुपये के बराबर ला के रख दी है, और आप दलालों को कह रहे हैं कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको 500 रुपये फाइन करेंगे, अगर आप दोबारा पकड़े गए तो 3 महीने की आपको सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये दलाल किस लेवल के ऊपर काम करते हैं, कैसे गरीबों को लूटा जाता है। यकीनन इसके ऊपर फाइन बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके जरिए मंत्री साहब से ये कहना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया था, छोटे छोटे दुकानों को, मेरे चुनावी क्षेत्र में छोटे छोटे दुकानों को अपना छोटा छुपके से कारोबार कर रहे थे, तो प्रशासन ने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया फाइन दिया छोटे छोटे दुकानों को। मैं उसके अंदर जब हस्तक्षेप किया, लेबर कमिश्नर के सामने जाके बैठा, आंदोलन किया, तो 3 लाख रुपये की फाइन 3000 रुपये हो गई। उन लोगों को तो राहत मिल गई, लेकिन मंत्री साहब मेरे ऊपर एक केस रजिस्टर किया कि मैं सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहा हूं, पिछले 2 साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। तो मुझे यह एहसास होता है कि आज इस देश के अदालतों के अंदर अगर लाखों केसेस पेंडिंग है तो ऐसे केसेस पेंडिंग है। 1 घंटे के अंदर ये केस अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी का अहंकार को मैंने ठेस पहुंचाया था तो केस रजिस्टर किया गया है। आज 2 साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जब आप ये कह रहे हैं कि ये लॉयर्स का जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत प्रोफेशन है, लेकिन जब यंग लॉयर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, तो इन्हें स्टाइपेंड मिलना चाहिए और इनके लिए भी मदद होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं लॉयर नहीं हूं, मंत्री साहब मैं लॉयर नहीं हूं, ना मेरे पास लॉ की डिग्री है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल किया हूं, सिर्फ आधा मिनट, एक PIL फाइल किया हूं जनहित याचिका मेडिकल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं औरंगाबाद बेंच ऑफ हाई कोर्ट का कि जिन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं सिर्फ मुझे सुनकर। मैं वहां पर 2 साल से वकील नहीं लगाया हूं। अदालत ने मुझसे कहा कि आप वकील क्यों नहीं लगा रहे, तो मैंने कहा कि वकील कानूनी भाषा बोलेगा। मैं दिल से बताना चाहता हूं कि हमारी मेडिकल सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। इसलिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बस बशर्ते इसके अंदर से दलाल, बिचौलिए, ये टाउट्स है, इन्हें हटाना चाहिए। और यकीनन आप इस बिल को लेकर आइए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है, हम ये समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर श्री गिरिधरी यादव जी। सरकार के द्वारा जो
अधिवक्ता संशोधन बिल लाया है, अच्छी बात है, लेकिन समग्र होना चाहिए। ये बिल पार्ट में, यदि ये बिल समग्र में आता, पूरा आता तो और अच्छा होता। आपने सिर्फ कहा कि टाउट को हटा देते हैं इसमें से, अच्छी बात है, हटा दिए, लेकिन जो वकीलों की स्थिति है, जो शामिल होते हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज का कोई इंतजाम नहीं। ये पूरी बिल कि जो जूनियर वकील हैं, जो नए वकील हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एकदम बहुत सारा अंतर है। इस देश के सीनियर वकील को पैसा रखने का जगह नहीं है, इस देश के जूनियर वकील को खाने का ठिकाना नहीं है। इन बातों को क्यों नहीं, फीस कौन सा फीस क्या रखेगा वकील लोग? इस देश की जो गरीब जनता जाती है न्यायालयों में, कोई रेट ही तय नहीं है। जो मन माया बोलता हम 20,000 लेंगे, कोई बोलता 30,000 लेंगे, कोई बोलता लाख लेंगे, बोलता कोई ठेका ले लेंगे। आप जब कोर्टों में जाइएगा, आप केस लड़िएगा, आप देखिएगा, गरीबों से बात करिएगा, तो आपको पता लगेगा कि इस देश में न्यायालयों की क्या हालत। अच्छा बिल लाए हैं, दलाल को आप हटाइए, हटाना भी चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि उसमें दलाल नहीं, लेकिन दलाल न्यायपालिका के अंदर भी है। आपको देखना पड़ेगा कि जो जज और वकील के बीच कहीं कहीं जो कॉन्वेंस है, उसको भी खत्म करिए। उसके जो मुंशी हैं, उसको तो लाइसेंस है, कैसे हटा देंगे उसको आप? ये बाहर से कोई नहीं आता, वहीं जो वकील के जो मुंशी हैं और लोग हैं, वो क्या करिए? आप किसी को कहिएगा दलाल है, वो मुंशी अपना वकील बना लेगा, क्या कर लेंगे हम और आप प्रैक्टिकल नहीं है। अब बिल क्या होता है, आप क्या करते हैं इस देश में, बिल को एसी चेंबर में बनाते हैं। आप कभी, आपका जिसने बिल बनाया, क्या किसी कोर्ट में गरीब से जाके बात किया? किसी जो जेल में उससे बात किया? बिना दलाल में कैसे होगा भाई? वो हम जेल में, मान लीजिए कोई मेरा एक आदमी है, उसके घर में कोई नहीं है, कोई आदमी उसको छुड़ाने के लिए गया, उसको अब दलाल बना के जेल में डाल दीजिए, उसको छुड़ाएगा कौन? कुछ लोग उसका दिल्ली कलकत्ता में कॉम्प्रेसिव बिल लाइए, पूरा लाइए कि कैसे हम उसको, आप उसको मदद दीजिए। जिसके कोई परिवार में एक आदमी जेल गया, उसके घर में कोई महिला है, वो कैसे कोर्ट में जाएगी? जेल में टिप्पा लेना है, कौन लेने जाएगा जेल में टिप्पा? आपको पता ही नहीं कि जो जेल में उसको टिप्पा लेगा तब वकालत फाइल कर सकते। इस देश में वकालत का जो पैसा है, बड़ा पैसा, और आप जानते हैं इसका जो वकील लोग क्या होते हैं, देश में क्रांति लाते हैं। चाहे जार के खिलाफ क्रांति हुई हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हो, तो सब में वकीलों का योगदान है। और इस देश की आजादी में जितने बड़े देश में आजादी के नेता थे, चाहे वो नेहरू जी हो, गांधी जी हो, सारे लोग पैसे से वकील, उन लोगों का कैरेक्टर था, उन लोगों ने देश में दिया। इसलिए आप जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में हम चाहते हैं ये सरकार अच्छी काम कर रही है, इसको और अच्छे तरीके से करिए कि सब पक्ष को सुनिए आप और रखिए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेके लाइए। ये बिल तो आप पास करिए, लेकिन जो गरीबों का हालत है, जो बरसों से केस में, अब एक हाईकोर्ट है मेरे पास बिहार में, पटना हाईकोर्ट, आबादी हमारी कितनी है? 12 करोड़। आप एक हाईकोर्ट नहीं दे रहे। छोटे छोटे राज्यों को अब 2 हाईकोर्ट दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में अब 3 हाईकोर्ट दे रहे हैं। हमको आपत्ति मध्य प्रदेश के हाईकोर्टों से नहीं है। आप क्यों नहीं बिहार में एक बेंच बना? आपको बिहार से सख्त नफरत है। बिहार ने 39 सीट दिया, पहले 31 सीट दिया, लेकिन बिहार के साथ जो नाइंसाफी इस भारत की सरकार कर रही है, वो बिहार की जनता देख रही है। आप क्यों नहीं बनाना चाहते? आप आबादी के अनुसार, हम लोग बरसों से जेल में पड़े रहते हैं, इंटिसिपेटरी फाइल करते हैं 6 महीने में आता है, बेल फाइल करते हैं 5 महीने में आता है, बस जज की संख्या नहीं है। हम चाहते हैं एक ऐसा बिल लाइए कि आबादी के अनुकूल हमारे राज्यों में भी बिल, हमारे राज्यों में भी हाईकोर्ट का बेंच बने। नहीं बनाते हैं क्योंकि आपको तो हमारे राज्य से खाली वोट लेना है, जात पात करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, वोट मिल जाएगा। आप आके यहाँ खाली गुजरात, महाराष्ट्र, इनका विकास करिएगा। कोई चिंता आपका हल्ला से हमको नहीं है। आपके हल्ला पर मेरा कोई असर पड़ने वाला नहीं। जनता बता कि बिहार की जनता आने वाले चुनाव में आप लोग बिहार में क्या असर होगा, जब जानते हैं इन बातों को। हम जानते हैं, समग्र बिल नहीं लाते हैं। आप एकदम नाइंसाफी करते हैं हम लोग के साथ। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के साथ भी न्याय हो और बिहार में एक हाईकोर्ट का बेंच खोला जाए। इन्हीं बातों के साथ अपने बिल का समर्थन करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती अपरूपा पोतात जी। Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on this bill, sir. So the bill has been listed for the business so many times, yet it never came up for discussion. सिर्फ तारीख पे तारीख आता गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई सरकार को। This bill is a very noble, they have brought it with a very noble object, but it's a decade late.
the 249 Law Commission report that made the recommendation of repealing the Legal Practitioners Act 1879 was laid in October 2014. Hence, it took for this government 10 years to adopt this recommendation, and this should be brought much earlier. Even when the government has adopted the recommendation, they have done it in a half-heartedly manner. I have some suggestions, though my learned advocate, my senior member have already spoken from my party, Kalyanda have already spoken, but I have some suggestions. The government should have at least come out with some sort of awareness campaign about the practice of tout and it being illegal. Unfortunately, a common man, a sadharan public, who have a legal case to fight may not be able to identify a tout, although and end up by paying hefty fees to him. क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर इसके पास जाएंगे तो शायद मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा. तो ये चीज जो है, इस चीज पर एक क्लियरिटी होना चाहिए. द गवर्नमेंट यूजुअली एडवोकेट्स टू गो डिजिटल. ये गवर्नमेंट हमेशा कहते हैं डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटली. बट व्हाट हैपेंड इन दिस सिनेरियो? व्हाई कुड the government not make a single database when all could be uploaded their tout list? इनको tout list को upload कर देना चाहिए था courts में. This should have helped to mitigate this practice at a larger level and would limit this practice at scale. I beg to this government to make the judicial system more accessible and more inclusive. I am sure the entire house would like to see more robust and equitable justice system. The legal fees is the legal fees taken in throughout the country is not very regulatory. One end, few lawyers who charge a very high amount of fees up to 50 lakh rupees hearing. On the other end, the member of the legal aid cell are paid a marginal fees. In fact, a per capita spending by the government on legal aid is of lowest of the world, just 75 paisa. This is extremely concerning, and I would urge the government to make the system more equitable for all of us. As a policy maker, it is our responsibility to ensure that all the wheels of justice turn smoothly and fairly. Thank you, sir. Thank you. The next speaker is Srimati Navneet Rana ji. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023. सर, जो ये बिल लाए हैं, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज जो मंत्री महोदय ने इस सदन में लाए हैं. एवरी सिंगल मेंबर ऑफ दिस हाउस हैज सपोर्टेड दिस बिल. सर, बहुत साधारण सा ये बिल है और चेंजेस ये बहुत सालों से अपेक्षित था. जो एडवोकेट्स भी अपने जिले में काम करते हैं, जो जिनसे हमसे बात करते हैं, हमारी डिस्कशन होती है. एक ट्राइबल क्षेत्र से, जहां मेरा क्षेत्र ट्राइबल पड़ता है, दार्मी मेलघाट से जब एक आधा किसान आता है या एक्सीडेंटल केस होता है या फार्मर्स की लैंड के कंसर्न होता है फॉरेस्ट के साथ या उनके आपसी फैमिली के प्रॉब्लम्स में, जब वो किसान प्लेन पट्टे पे आके कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद वो इतना अनएजुकेटेड है कि उसे हर चीज समझाना बहुत मुश्किल है. तब उनका ट्रैपिंग का जो मामला आता है, जो कोर्ट में पहुंचते बराबर, गेट के पहुंचते बराबर वो वहां पे ट्रैप कर लेते हैं. किसान की जो फार्मर्स की लैंड है या एक्सीडेंटल केस है, तीसरी पीढ़ी आने तक वो सॉल्व नहीं होती है सर. पर उसके केस का निर्णय जब लगेगा, पर वो जो एक आधी एकड़ उनके पास रहती है वो भी बिकने की बारी आ जाती है. तब तक उसका कोई निर्णय नहीं लगता और उसको तारीख पे तारीख दिलाने वाला जो ये इमीडिएटर, जो दलाल वहां पे गेट पे बैठा रहता है, जो आते बराबर उन्हें ट्रैप कर लेता है, इसको हटाने का जो बिल लाया गया है दी बेस्ट है. क्योंकि एडवोकेट से बात करते हुए, क्योंकि नया जब एडवोकेट कोर्ट में आता है तो उसे 2-2.5 साल लगते हैं अपनी सोशलाइट बना के लोगों तक अपना संपर्क करना. तो ये वहां पर ही एडवोकेट को जितने पैसे जाते नहीं है, उससे कई ज्यादा ये बिचौलिया उनसे ले लेता है. और इसमें नुकसान होता है जो गरीब, जो आदिवासी परिवार के लोग जाते हैं अपने केस लेके, या किसान के जो पानधान रस्ते होते हैं, हमारे मराठी में पानधान कहते हैं,
पगड़ी रास्ता मुझे कहते हैं लगता है, तो वो रास्ते पे जो वाद होते हैं बहुत सालों तक चलते हैं, उसमें उसके किसान की खेती बिक जाती है पर निर्णय वो बिचौलिया लगने नहीं देता है। और ये हटाकर मुझे लगता है डायरेक्टली जो गरीब वर्ग है जिन्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता है, वो ऐसे किसानों को, ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा डायरेक्ट फायदा होगा। सर एक और प्रॉब्लम देखी गई है जब हमने सभी एडवोकेट से बात की कि मेजरली प्रॉब्लम्स व्हाट यू फाइंड व्हेन दिस पुअर पीपल, नीडी पीपल कम टू यू, दे से वी कैन नॉट हेल्प देम इन एनी विच वेज। आई सेड व्हाई यू कैन नॉट हेल्प देम? तो उन्होंने ये साफ कहा है, अगर हमारी मंशा भी रहती है कि गरीब महिला कोई अपनी फैमिली कोर्ट में आती है, फैमिली को इशू लेकर आती है या एक्सीडेंटल में किसी का हस्बैंड गुजर जाता है, तो उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिलने चाहिए। उसके लिए अगर हमें उन्हें डायरेक्ट मदद भी करना है, पर बिचौलिया पहले ही आके बोल देता है कि एडवोकेट साहब इन्हें मदद नहीं करना है, आपने अपने पैसे जो चार्ज करते हैं उससे इतना बढ़ाकर चार्ज करना, अगर 50 मेरा है तो 1.5 आपने चार्ज करना है, उसके कम आपने चार्ज नहीं करना है। तो एडवोकेट ऑल्सो बिकम्स हेल्पलेस सर। पर उस दौरान सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिचौलिया इतना फेमिलियर हो जाता है वो परिवार के साथ कि अगर हस्बैंड गुजर जाता है एक्सीडेंट में या एनी विच वेज कि डिवोर्स का कोई विषय चलता है, तो वो इतना फेमिलियर हो जाता है, फीमेल के पास पैसे नहीं रहते हैं देने के लिए, तो वो उनका मिस यूज करती है वो फीमेल का, वो बिचौलिए। तो ये बिल लाकर, अमेंडमेंट लाकर, मुझे लगता है ऐसे परिवारों को, ऐसे किसान को, जरूरतमंदों को जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं और जिनके कारण, बिचौलियों के कारण बहुत ज्यादा नुकसान डायरेक्टली ये गरीब लोगों को होता है, और ये लाकर मुझे लगता है उनको डायरेक्ट फायदा हमारे मंत्री महोदय पहुंचा रहे। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और वी सपोर्ट दिस बिल। थैंक यू। धन्यवाद श्री संतोष पांडे जी। सम्माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर और बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। महोदय, ये जब ये विधेयक आज पेश हो रहा है और सब लगभग हम सभी सहमत हैं, एक समसामयिक 4 लाइन का कोरस मुझे ध्यान में आता है। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृतियों को ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, दूसरों की यह नकल है अस्मिता क्या मान ले हम, इस पराये तंत्र को निज तंत्र कैसे मान ले हम, देश के भवितव्य को ही अब चुनौती मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। ये जितने भी शोधन, संशोधन, परिवर्तन और आज भी जो ये संशोधन जो लाया गया है इस देश में, जितने भी और ऐसे जिसमें परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, ये काम और ये बीड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारे विधि मंत्री सम्माननीय यहाँ उपस्थित है मेघवाल जी, उन्होंने उठाया है। मैं इस ये विधेयक जो कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 के तहत दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है। महोदय, 1961 अधिनियम कानून को समेकित करता है, कानूनी व्यवसायियों से संबंधित और बार काउंसिल और अखिल भारतीय बार का गठन करता है। विधेयक की मुख्य विशेषताओं में ये शामिल है। विधेयक में ये जो दलाल हैं, विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी, और जिसमें कहे कि जिला कलेक्टर पद से नीचे नहीं है, ऐसे दलालों की सूची बनाकर और प्रकाशित कर सकते हैं। महोदय, ये जो टाउट है, जो दलाल एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो या तो किसी को भुगतान के बदले कानूनी व्यवस्था में कानूनी और व्यवसाय के रोजगार की प्राप्ति का प्रस्ताव करता है। महोदय, नागरिक या आपराधिक अदालतों
के परिसर जैसे स्थान पर, जैसे राजस्व कार्यालय है और हॉस्पिटल जैसे हैं, ऐसे रोजगार प्राप्त करने के लिए और रेलवे स्टेशन में न्यायालय के स्थान पर यह न्यायाधीश किसी भी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर से बाहर कर सकता है जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल है। महोदय, सूचियां तैयार करना, दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी अधीनस्थ अदालतों को कथित या दलाल होने के संदेह वाले व्यक्तियों के आचरण की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। एक बार जब ऐसा व्यक्ति और दलाल साबित हो जाता है तो उसका नाम प्राधिकारी द्वारा दलालों की सूची में शामिल किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को शामिल किए जाने के विरुद्ध और बताने का अवसर प्राप्त किए बिना, यानी लांछन से बचाने के लिए और ऐसी सूचियों में शामिल नहीं किया जाएगा। महोदय, इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है, दंड का प्रावधान है और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति दलाल के रूप में कार्य करता है जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे 3 महीने का कैद और कुछ 500 रुपये का जुर्माना तक का जो प्रावधान है, ये दंडित करने का जो प्रावधान है, ये वास्तव में बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही सोच समझ करके, और मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। पारदर्शिता, न्याय मिलनी चाहिए और जैसे कहा गया कि न्याय के साथ साथ न्याय मिलते हुए प्रतीत भी होनी चाहिए। पवित्रता, शुचिता आज आवश्यक है और इसके लिए जो है संशोधन विधेयक जो लाया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Now the Honorable Minister. डिप्टी चेयरमैन सर, जो आज चर्चा आपने प्रारंभ करने की अनुमति दी थी, ये बिल है द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास्ड बाय राज्यसभा और ये एडवोकेट एक्ट 1961 है, आपने ठीक कहा, वही बिल है। 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा ने इसको पास किया। आज ये हाउस लोकसभा इस बिल पे चर्चा भी कर रहा है और मुझे लगता है सर्वसम्मति से पास भी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए सभापति महोदय, इसमें जो लोगों ने भाग लिया, करीब 21 लोगों ने भाग लिया, कि कार्तिक चिदम्बरम से शुरू किया और अभी लास्ट में हमारे संतोष पांडे जी तक, और आपने भी इसमें भाग लिया। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विषय बहुत छोटा सा था लेकिन इसमें चर्चा करीब करीब 3 घंटे से ज्यादा हो गई। तो सबसे पहले मैं आपके सब्जेक्ट का ही जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट उठाया था इनके प्रेमचंद्र जी। ये 1879 एक्ट है, ये कॉलोनियल एक्ट है और रिपील होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने ये तय किया है कि जो कॉलोनियल लॉ है और उसकी यूटिलिटी नहीं है, जिसका भर्तृहरि मेहताब साहब जिक्र कर रहे थे, वो समाप्त होने चाहिए। तो देश में भी इसका स्वागत हुआ। अब तक 1486 ऐसे लॉ समाप्त हो चुके हैं, 1486। अभी और कुछ पाइपलाइन में है, कुछ अभी एक साथ और लेकर आएंगे। आपका जो क्वेश्चन था कि सेक्शन 36 आप 1961 में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो क्या आप चाहते थे कि 1879 का लॉ एज इट इज रहे? हम उसको रिपील कर रहे हैं, लेकिन 36 का जो ये टाउट वाला जो सब्जेक्ट है, ये कमेटी को भी ठीक लगा, हमारे डिपार्टमेंट को भी ठीक लगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी ठीक लगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लगा, क्योंकि वकील की ड्रेस में बहुत से लोग ऐसे आते हैं, वो वकील नहीं है, उनकी डिग्रियां भी फर्जी है, और वो आकर के किसी को ठगते हैं, तो उसका प्रावधान क्या हो? तो ये ऑलरेडी 1879 में प्रावधान था, इसको उठा करके हम 1961 में लाए। छोटा सा अमेंडमेंट था, 45A हमने इंसर्ट किया, और इसका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है कि जो कॉलोनियल लॉ है वो हम, जिनकी यूटिलिटी नहीं है, वो हम समाप्त करेंगे। 1961 तो हमने इसी सदन में पास किया। जो आप कह रहे थे
कि टाउट शब्द उस समय वो ऑलरेडी ये 1961 में सोचा नहीं ना उस समय की सरकारों ने कि पुराने जो कॉलोनियल लॉ है उनको भी समाप्त करना है। मैं यूपीए के 10 साल का आपको विवरण दूंगा। हमने अभी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 1486 कानून समाप्त कर दिए। मनमोहन सिंह जी के समय 10 साल आप भी थे, एक भी ऐसा कॉलोनियल लॉ जो था ना वो रद्द नहीं किया। इसका मतलब उसके पास सोच ही नहीं था। हमारा प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पंच प्रांत, जिसका जगदीप पाल साहब जिक्र कर रहे थे, विकसित भारत, मानव केंद्रित बनाना है विकसित भारत 2047 तक। विरासत पर गर्व, ये दूसरा प्रण है। तीसरा है कि गुलामी के हर चिन्ह से मुक्ति, ये हम मुक्ति लेने का काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं हम। एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन, ये कुछ विषय पंच प्राण के थे जिनका हमने जिक्र किया। और बहुत से विषय इसमें आए, उनका मैं जिक्र थोड़ा थोड़ा करूंगा। अब ये राजा साहब अभी है नहीं, लेकिन इतना नहीं बोल देना चाहिए कि भाई ठीक है यहाँ प्रिविलेज है, लेकिन करप्शन तो समाज की प्रॉब्लम है ना। अगर कोई आदमी एग्जीक्यूटिव में है, कोई आदमी जुडिशरी में है, कोई आदमी प्रेस में है, कोई आदमी लेजिस्लेटिव विंग में है, अगर वो करप्ट है तो समाज की प्रॉब्लम उसको दूर करना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन आप किसी को इंडिकेट करो और उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट रीजन और ऑब्जेक्ट हमें मिले ही नहीं, बिल में ही लगे हुए हैं, या तो उन्होंने पूरा देखा नहीं, जुडिशियल सिस्टम को पूरे कोई वो गड़बड़ बता के। कल्याण बनर्जी साहब बैठे हैं, इनकी एक बात का मेरे टेलीफोन पे भी इनसे कुछ बात हुई थी, ट्रांसफर ऑफ जजेस पे इन्होंने कहा पॉलिसी होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफर ऑफ जजेस, आपको सबको पता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस 93 के बाद कॉलेजियम के पास है। ट्रांसफर ऑफ जजेस का भी कॉलेजियम से सिस्टम आता है। आपने कहा भी पिक एंड चूज, या अब कॉलेजियम के सिस्टम पे कभी अपन बहस कर सकते हैं, इसी हाउस को बहस करनी चाहिए। हम तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए थे, आप भी बोले थे, आप बहुत अच्छा भी बोले थे, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन उसके बाद आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस पे देयर मस्ट बी ए पॉलिसी, हम इसको स्वीकार करते हैं। और आपकी बात को हम जुडिशरी से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वहां कंसल्ट करके कोई अगर पॉलिसी बनती है तो हम इसमें आगे काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके भर्तृहरि मेहताब साहब ने बहुत अच्छा बिंदु रखा कि जिनकी यूटिलिटी नहीं है वो एक्ट समाप्त हो रहे हैं। इसी की भी यूटिलिटी नहीं थी 1879 की, लेकिन टाउट को सबने कहा कि भाई कोई ठगी करेगा तो उसका क्या इलाज है, इसलिए हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। बाकी जो बिंदु आए हैं अधिकतर वो आए हैं कि जो कोर्ट वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट का विषय आया, इंश्योरेंस, चैम्बर लॉयर्स के, सिक्योरिटी, ये सारे विषय आए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे कोई वर्ग हो, कोई प्रोफेशनल सेक्शन हो, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। तो वकील कैसे पीछे छूट जाएंगे? वकील भी पीछे नहीं छूटेंगे। इंश्योरेंस का विषय मैं खुद डील कर रहा हूं, मैंने राज्यसभा में भी कहा है, और अभी संविधान दिवस के अवसर पर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन में गया था, वहां भी मैं कह के आया हूं कि इंश्योरेंस में अगर आपको कंट्रीब्यूशन देने में कोई दिक्कत है तो आप प्रपोजल लेकर के आइए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग जल्दी प्रपोजल लेकर आएंगे। हम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स में जहां भी जरूरत होगी, भारत सरकार पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं करेगी। जो प्रपोजल विजिबल होगा, हमारे वकील भी इतने ही प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी का विषय आया तो इनके लिए भी हम कुछ करने के लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। एक विषय आया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 10-12 साल पहले कभी आप कोर्ट परिसर में जाते थे तो आप किसी से पूछते थे मेरी पेशी कब है। आज तो साहब वहां मशीन लगी हुई है, उस पर जाके टच स्क्रीन लगी हुई है, उस पर जाकर अपना नंबर डायल करो, उसमें अपना लिखो नाम, आपकी पेशी का पता चल जाएगा कि आपका ये कोर्ट है, इसमें आपकी पेशी है, अगली डेट ये है, जाना ही नहीं पड़ेगा। ये मोदी जी की सरकार है साहब, ये समझ में ही नहीं आया क्या? मोदी जी की गवर्नमेंट में ईज ऑफ लिविंग ये हमारी प्रायोरिटी है। और मैं आपको सदन को बताते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है कि ई कोर्ट एक हमारी स्कीम चल रही है, ई कोर्ट, उसमें 7,280 करोड़
नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये कमेटी बनी हुई है और जहां जहां भी जरूरत है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे किसी ने कहा बेंच नहीं है, मलुक नागर साहब चले गए, उन्होंने कहा मेरठ में बेंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हम लोग मिलकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम दावा पेश करने का, बेल गारंट करने का सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं क्या। ये तो बहुत अच्छा एक कदम है कि अगर बेंच नहीं बनी किसी वजह से, क्योंकि बेंच बनने के लिए जो संबंधित हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का, उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर का, उनकी कंसेंट चाहिए, कई बार कंसेंट नहीं मिलती है। लेकिन हम वीसी के माध्यम से हाई कोर्ट की सुविधा जैसा अगर सुविधा उपलब्ध करा दें तो उसमें दिक्कत क्या है। तो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा इस संबंध में दो चीजें और कहकर के मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक विषय मैंने उस समय कहा था मैंने राज्यसभा में कि वकील कई तरह के होते हैं। सब एडवोकेट अमेंडमेंट्स जो हम एक्ट लेके आए बिल लेके आए हैं, मैं एक जिक्र करूंगा महर्षि अरविंद, जो हमारे बहुत बड़े संत हुए महर्षि अरविंद, और उन्होंने डिवाइन लाइफ और कई पुस्तकें लिखी। महर्षि थे, अलीपुर बम केस में वो आरोपी थे। किसी ने कहा इनको सजा होगी, किसी ने कहा इनको फांसी होगी। एक दिन अखबार में छपा कि शायद मजिस्ट्रेट इनको फांसी की सजा देने वाला है। तो चितरंजन दास, जो उनके वकील नहीं थे लेकिन एक प्रसिद्ध वकील थे, जिनका जिक्र थोड़ा सा जगदीपाल साहब ने भी किया, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। प्रसिद्ध वकील थे, उन्होंने अखबार में पढ़ करके और वो कोर्ट में पेश हो गए। तो जज साहब ने पूछा आप इनके वकील हो क्या, आपको वकील किया क्या। उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं आया हूं, क्या मैं बहस नहीं कर सकता। फिर मैं अरविंद को पूछा, अरविंद घोष को, उन्होंने कहा मैंने कोई वकील नहीं किया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं बहस करूंगा। कोई फाइल नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही जिसके कारण जो वहां जज थे, ब्रिटिशर जज थे, उन्होंने कहा जज साहब आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो अरविंद घोष का थॉट है वो हमेशा अमर रहेगा। और जो बहस की उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा बहस की, और उसके चितरंजन दास की बहस के बाद कोई फीस नहीं ली। ऐसे भी तो वकील हुए हैं हमारे यहाँ, कोई फीस नहीं ली। और उस बहस के बाद महर्षि अरविंद को जज ने छोड़ दिया, एक्विटल हुआ। उसके बाद कितना बड़ा काम किया उन्होंने पांडिचेरी में जाकर के। तो ऐसे भी तो वकील हुए हैं। तो कुछ अच्छे सुझाव आए हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक बड़ा काम हमने अभी संविधान दिवस के अवसर पर किया, जिसका जिक्र करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा, 6 बज रहे हैं। अभी संविधान दिवस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। संविधान दिवस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी। उस अवसर पे लगी जब बाबा साहब को वकील के रूप में 100 साल पूरे हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट का इस अवसर पे धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मुख्य जो लॉन है उसमें ये परिसर में मूर्ति लगी है। और जब बाबा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं उनके मुकदमे फ्री भी लड़ने चाहिए, तो जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रतिमा लग गई है तो वो भी हमें दिशा दिखाएगी। तो मुझे लगता है सही दिशा में देश चल रहा है। और ये जो छोटा सा एक अमेंडमेंट है जिसका जिक्र मैंने आपको कहा चेयरमैन साहब, द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास्ड बाय द राज्यसभा, उसको आप सर्वसम्मति से पास करें, ऐसी मैं आपसे विनती करके मेरे स्थान लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, now it is already 6. If the House agrees, we will extend the House till this bill is passed. Yes. Now the bill is for consideration and passing. विधेयक पर विचार किया जाने हेतु प्रस्ताव। पक्ष यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों का पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में है। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। श्री सौगत राय जी नॉट प्रेजेंट। सौगत राय जी, अमेंडमेंट नंबर 4 and 5 not
Saugat Roy ji, amendment number 6, not present. प्रश्न ये है कि श्री सौगत राय जी 8 to 10 not present. खंडों की स्वीकृत करना. प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे. जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने. प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे. जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. मंत्री जी, आप यह प्रस्ताव करें कि विधेयक की पारित किया जाए. Chairperson, honorable Chairperson, sir, I move that the bill be passed as passed by Rajya Sabha. पक्ष एक की विधेयक का पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे. जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 5 दिसंबर 2023 की प्रात 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. थैंक यू.
a bill passed by both houses of parliament and assented to by the President. Adjournment of the sitting of the House. Termination of the sitting of the House, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings. सामने देख सकते हैं, इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। कुछ देर पहले जिन कमांडोज ने दुश्मन की चौकी को नष्ट किया था, अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से दुश्मन के इलाके से निकाल ले जाएगा। हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही ये कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं। जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है। तत्पश्चात सभी जवान पेयर में जोड़ी में उड़ चलते हैं। इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए ये जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करते हुए